with cryptocurrency. To get a better understanding of this, we have invited Mr. Sudeep Bandyopadhyay of IndiTrade. Welcome to 3.0 TV, sir. Thank you. Thank you for having me here. It's a pleasure to be with you guys and talk about this interesting topic. Please explain us in detail the importance of CBDC and what led RBI to launch CBDC pilot project in India. Its importance and likely benefits from this new age technology which can disrupt our usual way of paper currency deals. The initiative taken by RBI to launch CBDC is unique and one of the most interesting developments in the financial markets in the recent past. We have been flooded with crypto exchanges, cryptocurrencies. However, the reliability and the bankability of cryptocurrency was always under big question mark. I think Indian Central Bank has stepped in that territory. A digital currency launched by a central bank will obviate, will take care of the concerns around credibility and reliability of the digital currency. So this central bank digital currency will have the same weightage, same credibility as currency notes have, without the additional hassle of physically handling currency notes and physically carrying currency notes. It benefits both the issuer, which is the central bank, and the user. The cost of issuance from a central bank's point of view comes down significantly, and for individuals, I think this is a completely hassle-free digital transaction which is akin to using cash. And the traceability, the biggest benefit in some way for cash is that it is not directly traced, directly linked. And some individuals for some transactions prefer that. Now digital currency will provide that anonymity will be provided by the digital currency. CBDC places question mark on existence of banks, cryptocurrency and UPI, similarly on other technology-driven activity. So, sir, how do you think the CBDC can change scenario of financial transaction, and will it pose a threat to UPI? The biggest and most interesting aspect of CBDC is that we did not work with a bank or use a particular platform for linking. So in case of UPI, you are tied down to a particular system for using UPI, whether it's the particular system introduced by the government or some of the private players. You don't have to worry about any particular system in case of CBDC. CBDC is issued by central bank and multiple bank platforms will be able to support that. As of now, RBI has allowed 4 large banks, including SBI and ICICI Bank, for this CBDC purposes. Going forward, we believe most banks will be brought under the net, and it will be a seamless transaction experience for the individuals and the users. It will be in that manner different from UPI, where you are still tied down to a particular system or a particular operator. Here it will be completely fungible, just like currency notes are. Central banks all over the world are thinking about launching pilots, but we must congratulate RBI to have gone off with the first CBDC, and I'm pretty confident that this will have a strong use case, and central banks all over the world will start following the example set by RBI. As far as the disadvantages of CBDC is concerned, we would go back to pretty much the same old argument of cash versus bank transaction. In case of cash, traceability becomes difficult. In case of cash, the handling becomes an issue, whereas the handling part is being taken care of. The traceability challenges still remain, which in a way provides the benefit to the user of remaining anonymous while using the CBDC. On the other hand, from the regulatory point of view and from many other transaction tracking perspective, this CBDC will not be traceable to the extent bank transactions are. However, we believe that there is place for
CBDC as well as bank transactions as well as currency. We believe in an ideal scenario, in a future world, all three, cash, CBDC as well as bank transfers, will coexist and make transaction experience more robust for individuals and corporations. All right, so thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you. Coexistence of banks, UPI and CBDC as well as seamless operations of India's financial process is what Mr. Sudeep Bandyopadhyay believes in. Ending on that optimistic outlook, this is me, Vishakha Thakur, signing off for now. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel, and for instant updates, do press the bell icon. Cryptocurrency bear markets can be brutal for new investors without sufficient experience. The swings are typically a lot more violent compared to traditional stock markets. And it is not unheard of some coins to lose 90% or more from their all-time high values. Not having sufficient knowledge or experiencing a cryptocurrency bear market for the first time can have investors commit many mistakes. With this in mind, learning from people who have been around in previous cycles as well as identifying these mistakes in advance could save both money and emotional hurdles. Hello and welcome to 3.0 TV. I'm your host Ruchi Sharma, and today we are going to explore the mistakes that traders and investors make during a cryptocurrency bear market and how to avoid them. But before moving ahead, like and share our videos, subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon to get instant updates. Okay, let's get started. The first mistake is panic selling. Panic is universally bad. This is because when we panic, we experience an intense sensation of both fear and anxiety, and it usually comes as a response to an existing danger. When this happens, we tend to be more prone to losing control and making reactionary decisions that are devoid of common sense and logic. In the realm of trading and investing, panic selling refers to the action of a widespread sell-off of a cryptocurrency because of fear, rumor, or in general an overreaction instead of a reasoned and carefully planned analysis. Investing in a cryptocurrency is an act that should be based on sound, objective merits rather than emotions. During the times of aggressive sell-offs, many investors panic. This is entirely normal, but also likely to be the most common mistake. Remember, no asset goes up in a straight line. There will be bumps along the journey. So do not sell based on panic, but on sound, objective judgment. The second common mistake is called marrying your bags. While you should avoid panic selling, this also does not mean that you should never sell. Realizing that you made a bad investment and casting your ego aside is just as important. Many people get married to their bags, meaning that they form an emotional attachment to the investment and foregoing reason and logic when the narrative behind it fails. This is something that happened to many people back in 2017 and 2018, when the ICO boom was peaking. Many investors got in early, made serious returns, but failed to realize them in chase of even higher ROI. Later on, when their cryptocurrency started crashing, they did not sell because they were convinced of their recovery. The fact of the matter is that many of the altcoins that have lost over 90% of their value since the all-time high are unlikely to revisit these levels. Do not be afraid to cut your losses and move on. The third common mistake is overtrading. This has a lot to do with mishandling emotions too. Overtrading is frequently the consequence of a few things:
regret of misreading of investment thesis, missing an opportunity, the strong desire to recoup previous losses, and so forth. The one thing all of the above have in common is that they prompt emotion-based decision making. Remember, the market does not care for your emotions. The charts are nothing but a visual representation of information, and it is up to you how you will interpret this information. In all cases, though, this is a process based on nothing but objectivity, one where emotions have no room to thrive. This is also the fact that you pay additional trading fees when jumping in and out of trades. And if you're not managing this properly, they can add up pretty quickly. So be cautious and do not overtrade. The fourth common mistake is trying to time the bottom. Trying to time the bottom is another prevalent mistake that newcomers tend to make. It's a tale as old as time. BTC still has room to go down. I'll buy then. And then one of the two things happen. One, Bitcoin does go down, but they never buy, thinking once again that it has more room to drop. Number two, Bitcoin never goes down and they do not buy thinking that one last leg down will eventually come. But consider this. Imagine Bitcoin trading at $10,000 and you think it will go down to $8,000 in another 20% crash. You don't buy. And then Bitcoin goes on a parabolic bull run, hitting $100,000. Now ask yourself, were those 20% worth it? During the COVID crash in March 2020, when BTC dropped below $4,000, many people thought that the worst was yet to come as the world was on the brink of an economic disaster in the face of global lockdowns and a looming pandemic. But that never happened. Instead, BTC went on a rampant bull run where it topped $69,000 a year later. The point is, nobody knows where the market will go. It is all just educated and informed guesses. Therefore, if you're not a professional trader, one of the best strategies you can use is the dollar cost average. If you DCA on the way down, that's even better. The idea is that you take the amount of money you want to invest and you break it down into smaller batches that you invest on a regular basis. For example, once every 2 weeks or once a month. This will get an average price between all the entries and will minimize the risk. The fifth common mistake is not paying attention to mental health. From all of the above, one thing should be crystal clear: your mental health is paramount. No amount of money is worth sacrificing your well-being. Now that cryptocurrencies have somewhat entered mainstream mediums of investment, it's important to bring this up as more and more people get into trading and investing in crypto. Pay attention to your mental health. Do not neglect it. During bear markets, prices tend to go down to the extremes, and it's commonplace for people to see their paper gains diminish. If that's the case, don't forget that there's life outside of crypto. It surely stings to lose life-changing money, but remember, there's no amount that's worth your health. So far, we have covered 5 common mistakes people tend to make during a bear market. But I want to make one thing absolutely clear: none of what I said before is financial or investment advice. For that, consult your financial advisor. The purpose of this episode is solely to entertain and educate. Investing in cryptocurrencies carries a high risk of capital loss. You can lose everything you invested. Therefore, never put in more money than you are willing to and can afford to lose. This is your host Ruchi Sharma signing off. We will meet again with more intriguing and educational content from the world of cryptocurrencies. Till then, keep watching 3.0 TV. Do not forget to like, share our videos and subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. Have a great day. We will keep you connected to the evolving world of NFTs. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3.
3.0 TV covers the latest crypto crimes, keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. किसी ट्रेडिशनल एक्सचेंज पर बिना जाए क्या कभी आपने क्रिप्टो में ट्रेड करने के बारे में सोचा है? अब आप कहेंगे भला ये कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि ऐसा हो सकता नहीं बल्कि हो रहा है, और ऐसे ट्रेड को OTC ट्रेडिंग के तौर पर रेफर किया जाता है। OTC ट्रेडिंग स्टैंड अलोन ट्रेडिंग डेस्क और बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनरली OTC ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो सेलर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट का एक वेरिड नेटवर्क मेंटेन करता है। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की होड़ में OTC ट्रेडर्स लगातार बायर्स और सेलर्स की तलाश में रहते हैं जो अच्छे प्राइसेस पर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा OTC ट्रेडर्स लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट से बातचीत करते हैं और अटकलें लगाते हैं, इसीलिए उन्हें दी गई किसी भी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन के बेस्ट टाइम को वो डिटेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। एक बार बायर्स और सेलर्स द्वारा ऑर्डर्स प्लेस किए जाने के बाद OTC ट्रेडर रिक्वेस्ट की गई ट्रांजैक्शन को खरीदने की कोशिशों में लग जाते हैं। क्रिप्टो OTC ट्रेडिंग क्या है? ओवर द काउंटर ट्रेडिंग का मतलब उन एजेंसियों या लोगों के जरिए ट्रेड करना है जो आपके लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, जो रेगुलर एक्सचेंजेस से अलग है। साफ लफ्जों में, अगर आप मेन स्ट्रीम सिवियरली रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के जरिए क्रिप्टो की परचेजिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग करने से बचना चाहते हैं तो समझिए OTC ट्रेडिंग का ऑप्शन आपके लिए ही बना हुआ है, जो प्राइवेसी, हायर ट्रांजैक्शन लिमिट और मार्केट फ्लक्चुएशन से गेट अवे प्रोवाइड करता है। ओवर द काउंटर ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है? OTC ट्रेडिंग के लिए कोई भी मेथड सेट नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है यूजर इंटरफेस की कमी, जो रेगुलर एक्सचेंजेस में भी होती है। ऐसे में ओवर द काउंटर ट्रेड अक्सर भरोसे पर किया जाता है, जहां सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पोस्ट किया जाता है, कोड दिया जाता है, नेगोशिएशंस किए जाते हैं और फिर आखिरकार सभी पार्टिसिपेंट के एग्रीमेंट पर ट्रांजैक्शन को पूरा किया जाता है। इसमें कभी कभी सिर्फ एक शख्स इन्वॉल्व होता है जो थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है, और जब बड़ी रकम की बात आती है तब एक एजेंसी बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाने के लिए वर्कलोड संभाल सकती है। ट्रेडिंग की सुविधा देने वाली OTC एजेंसीज के पास फिएट और दूसरी मेजर क्रिप्टो करेंसीज के मामले में अर्जेंट लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए खुद के रिजर्व्स भी होते हैं। OTC ट्रेडिंग के लिए साइन अप करना इजी होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी है। अब इजी इसलिए क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी OTC एजेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन इसे चैलेंजिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपके ट्रस्ट पर सभी चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसे में अच्छी बात यह है कि कई मेन स्ट्रीम क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक OTC डेस्क ऑफर करती हैं, जो आपको बिना डरे बड़े अमाउंट में क्रिप्टो ट्रेड करने की अनुमति देती हैं। ट्रेडिंग के दूसरे फॉर्म से यह अलग कैसे है? OTC और क्रिप्टो ट्रेडिंग के दूसरे फॉर्म्स के बीच मेन डिफरेंस ये है कि इसमें सेलर और बायर के बीच लार्ज वॉल्यूम में फिएट और क्रिप्टो की डायरेक्ट ट्रेडिंग की जाती है। वहीं दूसरे फॉर्म में जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडर और एक्सचेंज के बीच क्रिप्टो करेंसी की मदद से ट्रेड किया जाता है। हालांकि इसमें ट्रेड वॉल्यूम की स्ट्रिक्ट लिमिट्स भी शामिल होती हैं। किसे करनी चाहिए OTC क्रिप्टो ट्रेडिंग? OTC ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल सही है जो लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो OTC ट्रेडिंग डेस्क ऑपरेट करती हैं, वो अक्सर बड़े ट्रेड्स को एक्सचेंज से दूर रखने के लिए ऐसा करती हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती है। ट्रेडिंग डेस्क यूजर्स में हेज फंड्स, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स एंड हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स शामिल हैं, जो बड़े अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में सीमलेसली कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग एक्सचेंज का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्टली छोटे अमाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए P2P मार्केटप्लेस जैसे कि लोकल बिटकॉइंस एक कन्वीनियंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस भी P2P मार्केटप्लेस ऑफर करती है, जिसे बड़ी आसानी से छोटे ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या OTC क्रिप्टो ट्रेडिंग इस्तेमाल करने लायक है?
अगर आप क्रिप्टो करेंसी के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फिएट मनी या फिर कैश के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए OTC ट्रेडिंग काफी हद तक सही है। असल में ये ट्रेड का सबसे अच्छा फॉर्म है अगर ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि ये आपका समय और आपका पैसा बचाता है और कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है। होप आप OTC ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। OTC ट्रेडिंग के पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के साथ मैं रुचि शर्मा फिर लौटूंगी पार्ट 2 में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। हैव अ ग्रेट डे। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Metaverse Magic, where we bring you major updates from the global metaverse space. To begin with India, here's some good news for metaverse developers. Deloitte's new report, Metaverse, the Hype, Possibilities and Beyond, says that one of the key drivers of economic possibilities within the metaverse will be Web 3.0's ability to spur digital transformation. Experts say the future of metaverse is bright in India as the country has a massive role to play in leading the metaverse revolution. Here's what the founder and CEO of Loka Metaverse, Mr. Krishnan Sundararajan, has to say about it. The future of metaverse is I can sort of subdivide it into two categories. One is virtual worlds. So we will have companies like Loka, like Fortnite, Roblox, and the rest creating virtual worlds that are highly immersive in nature, where especially Unreal Engine 5 coming in, you will be in a world where you will sort of not be able to differentiate if what you're seeing is real or if it's virtual. It will be hyper realistic virtual worlds. That's one. Second are haptic devices. So when 5 senses of your body get engaged, currently with a VR device 2 senses get engaged, your eyes and your ears. When 5 senses get engaged, being in a hyper realistic world, wearing gadgets that help you sense the environment will help you replace reality in general. And that is what I think is going to be the future of metaverse: hyper realistic worlds, haptic devices to sense those hyper realistic worlds. And we have good news, and that too a big one for the African countries too. Meta is planning to offer the metaverse to Africa through smartphone apps as it sees a huge business potential there. Meta is spending $50 million in 16 African countries to educate users on VR, AR and XR. VR and AR companies in Africa like Black Rhino and Embassy 3D have created immersive media content ranging from education, environmental conservation to gaming and entertainment. Well, the cost of mobile internet is highest in Africa, while internet speed in the continent is still the slowest in the world. Meta hopes its 2Africa submarine internet cable will help reduce internet costs in Africa. The cost of Meta's VR headsets is too high for an average African family, and Meta is not going to reduce the cost of its VR headsets anytime soon. And now let's move on to next year's big surprises in the auto sector
Nvidia predicts that 2023 will be the year when many automotive companies will start integrating their operations with the metaverse. The company also believes that the implementation of metaverse tools will allow companies to monitor the whole production process of their vehicles, allowing them to propose improvements. All this will be possible only with the help of digital twins in the factories where these cars are being built. Also, according to a report, the global metaverse in e-commerce market is expected to grow by $85,885.22 million during 2023 to 2027. The fashion and entertainment world too promises more spice to life and beyond. Animoca brand subsidiary Darewise Entertainment has partnered with Skin Waders to launch Square, London's first NFT collection in Life Beyond Metaverse. Life Beyond, developed and published by Darewise Entertainment, is a science fiction multiplayer online role-playing game. It is built to give users a unique off-world experience and true digital ownership over their game assets. The partnership will further elevate Square's cult status for existing brand fans while bringing a new fashion following to the metaverse. Next on the list is Diepius Metaverse, that is all set to offer more to individual as well as business users. After experiencing success in the crypto space, DeFi Yield Protocol has announced a complete rebranding to Diepius. The experienced team conducted several months of research to come up with the best way to represent how they have evolved into the years. Users can take advantage of the Diepius Metaverse to bring their real-life businesses into a virtual space. Moreover, users can access unique opportunities to earn more rewards and in-game assets. The platform is set to offer unlimited possibilities for regular users and businesses through sustainable growth and constant innovation. While all this is quite encouraging for Metaverse, Mark Zuckerberg, the famed face of Facebook, does not seem to have anything encouraging on the table, at least from his own staff for the time being. Meta staff are hitting out at Mark Zuckerberg in blind reviews because they think his metaverse obsession will single-handedly kill the company. The staff has been writing reviews since the day Meta axed 13% of its workforce. Some 44 employees' reviews of Meta were posted on Blind recently. Meta employees have posted almost 6,000 reviews of the company on Blind since 2020. It'd be a small number considering the size and reach of Zuckerberg's company, but nonetheless, his business decisions have indeed courted controversy in recent years. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such updates on Metaverse from all over the world. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like this video, share and subscribe 3.0 TV, and yes, do not forget to press the bell icon to get instant updates. एंड अ वेरी वार्म वेलकम। OTC से जुड़े इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पहले पार्ट में जहां मैंने आपको OTC ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, वहीं इसके पार्ट 2 में हम इंडस्ट्री प्लेयर्स और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। OTC ट्रेडिंग क्या है ये तो हमने जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं इंडस्ट्री में मौजूद उन खिलाड़ियों के बारे में जो OTC सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्रैकन, दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट रेप्यूटेबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक है क्रैकन, जिसे साल 2018 में अपनी OTC सर्विसेज लॉन्च की।
क्योंकि क्रैकन 45 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है और सीमलेस सर्विस की एक्सटेंसिव रेंज प्रोवाइड करती है। इसीलिए बड़े पैमाने में बिटकॉइन की बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये फोरमोस्ट ओटीसी डेस्क मानी जाती है। इतना ही नहीं, अपने दायरे को और बढ़ाते हुए क्रैकन ने करंटली बिट ट्रेड और सर्कल ट्रेड को अक्वायर करने के साथ अपने ओटीसी बीटीसी एक्सचेंज सर्विस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। करंटली क्रैकन 45 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि ये फिएट करेंसी की वाइड वैरायटी को एक्सेप्ट करती है, जिसमें यूएस एंड कैनेडियन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड्स, येन एंड यूरोस भी शामिल है। क्रैकन प्रिलिमिनरी कंसल्टेशन से लेकर फाइनल ट्रांजैक्शंस तक पर्सनल वन-ऑन-वन ओटीसी सर्विसेज ऑफर करती है। ये सर्विसेज दुनिया भर के यूजर्स को 24/7 बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। क्रैकन में इंट्यूटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस और हाई लेवल की सुरक्षा है। अपनी ओटीसी सर्विसेज के लिए ये कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं और इस पर मिनिमम ट्रेड साइज की शुरुआत $100,000 से होती है। बाइनेंस ओटीसी। दुनिया में मौजूद पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात हो और बाइनेंस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाइनेंस भी क्रैकन की तरह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए पर्सनलाइज्ड डीप लिक्विडिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो लार्ज अमाउंट में बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को फास्ट और अनोनिमसली एक्सचेंज करना चाहते हैं। दरअसल बाइनेंस ओटीसी डेस्क बिटकॉइन ओटीसी ट्रेडिंग को फीचर करती है और क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन की वाइड वैरायटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिपल या लाइटकॉइन। इस तरह से करंटली बाइनेंस ओटीसी 75 से ज्यादा डिफरेंट टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सपोर्ट करती है। बाइनेंस ओटीसी का मिनिमम ट्रेड साइज $10,000 है, ताकि एवरेज रिटेल ट्रेडर्स भी लार्ज स्केल बिटकॉइन ट्रेडिंग की एडवांटेज को एंजॉय कर सके। इसके साथ ही बाइनेंस वन-ऑन-वन पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग सपोर्ट और फास्ट सेटलमेंट ऑफर करती है, जो यूजुअली कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। कॉइनबेस 2011 में फाउंडेड कॉइनबेस जानी मानी डिजिटल करेंसी एक्सचेंज में से एक है। हाल ही में कॉइनबेस ने अपनी एक डेडिकेटेड सब्सिडरी लॉन्च की है, कॉइनबेस प्राइम, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के क्रिप्टो एसेट मेंटेन करती है। ये प्लेटफॉर्म एडवांस्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे ओटीसी ब्लॉक ट्रेडिंग, मार्जिन फाइनेंस, एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम्स एंड मच मोर। कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल कवरेज प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड टीम की बदौलत आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड और हैसल फ्री बिटकॉइन ओटीसी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में मदद करती है। ये प्लेटफॉर्म हाईली सिक्योर है और कॉइनबेस की तरह इंटीग्रेटेड कस्टडी आर्किटेक्चर की एडवांटेज प्रोवाइड करता है। बिटफिनिक्स 2012 में फाउंडेड बिटफिनिक्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। बिटफिनिक्स क्लाइंट्स को अपनी ओटीसी सर्विसेज के जरिए $100,000 और उससे ज्यादा वैल्यू की बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो एसेट्स को प्राइवेटली ट्रेड करने की अनुमति देता है। यूजर्स डायरेक्टली दूसरे बिटफिनिक्स क्लाइंट्स के साथ ओटीसी ट्रेडिंग में एंगेज कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म के ओटीसी डेस्क के जरिए इंस्टेंट लिक्विडिटी एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में बिटफिनिक्स ने ETH फिनिक्स ट्रस्टलेस नाम के ERC20 टोकन के ट्रेड के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड ओटीसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज 0.02% चार्ज करता है। क्लाइंट्स ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और टोकन सिलेक्ट करते हैं जिन्हें वो एक्सचेंज या रिसीव करना चाहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें 0.02% फी चुकानी होती है। क्योंकि ETH फिनिक्स एक पीयर टू पीयर सर्विस है, इसीलिए ये पूरी तरह से यूजर पर डिपेंड करता है कि वो बायर्स को ढूंढे या फिर थर्ड पार्टी ब्रोकर से मदद ले। हॉबी ओटीसी 2013 में फाउंडेड हॉबी ओटीसी यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग और जापान में ऑफिस के साथ सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड फिएट क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को डिजिटल एसेट में ट्रेड करने की अनुमति देता है। हॉबी ओटीसी डेस्क का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स एक ओपन ऑर्डर बुक एक्सचेंज के बाहर बिटकॉइन और दूसरी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम और USDT की हाई वॉल्यूम में एक्सचेंज कर सकते हैं। हॉबी ओटीसी डेस्क सिक्योर और हाईली रेगुलेटेड है। हॉबी ओटीसी से जुड़ी खास बात यह है कि ये कोटेशन से ज्यादा फी चार्ज नहीं करता है और ये सभी ओटीसी ट्रेडर्स को आउटस्टैंडिंग वन-ऑन-वन ट्रेड सपोर्ट ऑफर करता है। इतना ही नहीं, हॉबी ओटीसी डेस्क का इस्तेमाल करके यूजर्स रोबस्ट लिक्विडिटी, मल्टी एसेट सपोर्ट और ग्लोबल एक्सिक्यूशन कवरेज की एडवांटेज उठा सकते हैं।
वहीं बहुत से दूसरे ओवर द काउंटर ब्रोकर्स की तरह हॉबी OTC की मिनिमम रिक्वायरमेंट साइज $100,000 है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस एपिसोड में आपको OTC ट्रेडिंग से जुड़े हर एक पहलू को समझने का मौका मिला है। ऐसे में OTC एक्सचेंजेस के जरिए की जाने वाली बिटकॉइन ट्रेडिंग में शामिल सिग्निफिकेंट अमाउंट की वजह से इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप बिटकॉइन को खरीदने बेचने के लिए OTC सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके द्वारा चुने गए पर्टिकुलर OTC ब्रोकर और लार्ज स्केल ट्रेडिंग के इन्स और आउट्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल मैं रुचि शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए 3.0 TV। This is Tuvalu, an island in the Pacific which is on the brink of sinking. The sinking island is now trying desperately to save its sagging fortunes and is determined to become the world's first digital nation in the metaverse. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Piece by piece, we'll preserve our country, provide solace to our people, and remind our children and our grandchildren what our home once was. Citizens of Tuvalu, young and old, are now trying to relocate to safer locations. Tuvalu's Minister for Justice, Communication and Foreign Affairs, Simon Coffey, has said that creating a digital twin of Tuvalu could preserve the country's culture. We are sinking. That's what the minister said. Take a look. We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today, like in Tuvalu, or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day. Tuvalu's tragedy has sparked off global concerns on climate change. You don't have to cede power by acting on climate change. And do you want to be a leader that you look back in time and say that you were on the wrong side of the argument when the world was crying out for a solution? And it's as simple as that, I think. Droughts, floods, storms and wildfires are devastating lives and livelihoods across the globe. The window to limit global temperature rise to 1.5 degrees is closing fast. In other words, we are headed for a global catastrophe. And the reason for this unfortunate tragedy is the blind race for a rapidly growing economy. But at what cost? Everything we've achieved in the last 10,000 years was enabled by the stability during this time. The global temperature
has not wavered over this period by more than plus or minus 1 degree Celsius. We are already in trouble. The UN and the USA have already raised a red flag over deteriorating health of the planet. We need to ensure that the financing will be there, both public and private, to meet the moment on climate change and to help us seize the opportunity for good jobs, strong economies, and a more secure world. If we are going to act on the scale that's required, climate change can't be seen anywhere in the world as just an opportunity to score political points. Well, Tuvalu could just be a wake-up call for the rest of the world, since there could be many more Tuvalus the world over. Tuvalu has already taken its first step towards reviving its fortunes as a nation in the metaverse. Tuvalu is an archipelago consisting of 9 islands located between Australia and Hawaii, with a population of approximately 12,000 people. It is also the 4th smallest country by area in the entire world. The Pacific nation has been one of the biggest voices in the fight against climate change that has affected its very existence beyond imagination. Every year, the country suffers severe flooding caused by high tides, with scientists predicting that the island will become uninhabitable in future. With global temperatures expected to rise substantially as well, the island nation says it has no choice but to build a digital version of itself. The idea aims to preserve Tuvalu's history and culture before the nation goes underwater, if at all it does, and unfortunately so. The project, which was announced by Tuvalu Minister Simon Coffey at the UN Climate Change Conference, will catalogue, map, record and save historical documents, records of cultural practice, family albums and traditional songs. The aim is to capture as much of Tuvaluan island life as possible. Tuvalu has teamed up with global creative agency, The Monkeys, for the project. The Monkeys have created a dedicated website showing the digital project's progress. Over the past few years, Tuvalu has been developing digital solutions that could mitigate the impact of climate change on its citizens. In 2021, the government took steps towards establishing a Tuvalu National Digital Ledger, which would secure its citizens' data on a public blockchain. Well, none of us would ever want Tuvalu to ever lose its physical existence, but the 12,000 citizens of the world's 4th smallest country are sure going to interact real time in an immersive virtual world very soon, as it becomes the world's first digital nation. Well, that's all in today's special story. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.0 TV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और यदि बहुत लालच आ जाए तो फिर क्या पुरुष और क्या महिला। आज मैं आपको मुंबई के एक श्री 420 नहीं बल्कि श्रीमती 420 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने
चीनी माफिया के साथ मिलकर 100-200 नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। मुंबई में रहने वाली 29 वर्षीय आरोपी महिला ज्योत्सना चतुर्वेदी, उसके द्वारा की जा रही धोखाधड़ी का खुलासा शायद कभी होता ही नहीं अगर एक कॉलेज की 66 वर्षीय महिला प्रोफेसर अपने साथ हुए 36 लाख रुपए के स्कैम के बारे में साइबर क्राइम पुलिस के पास शिकायत न करती। एक दिन हुआ यूं कि इन बुजुर्ग प्रोफेसर को एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करने वाली महिला ने अपना नाम निकिता बताया। निकिता ने बताया कि investify.com कंपनी के जिस फंड में प्रोफेसर मैडम ने निवेश किया था वो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से डूब चुका है। थोड़ी देर बाद शिव नामक व्यक्ति का फोन आया जिसने बताया कि यदि मैडम $5000 और निवेश करे तो उनके डूबे हुए पैसे रिकवर भी किए जा सकते हैं। साइबर पुलिस के लिए यह पूरा मामला उम्मीद से भी ज्यादा जालसाजी से भरा हुआ था। मामले की गहराई से छानबीन करने पर साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि इस कंपनी ने रवांडा के बैंक ऑफ किगाली में 14.52 लाख रुपए, कनाडा स्थित नुआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से 10 लाख रुपीस और 9.86 लाख रुपीस मुंबई के एक फर्म ल्यूना द सॉल्यूशन को ट्रांसफर किए गए थे। साइबर क्राइम पुलिस के लिए फॉरेन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना तो मुश्किल था, लेकिन एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की तफ्तीश के बाद पुलिस ने खोज निकाली कि एक संदिग्ध महिला मुंबई से ही इस कंपनी के अकाउंट की कमान संभाल रही है। लेकिन इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस तो फर्जी था ही, यहां तक कि जिस शख्स के नाम पर इस कंपनी का करंट अकाउंट था उसे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। फिर पुलिस ने कंपनी अकाउंट से जुड़े फोन नंबर पर मौजूद पते की और अपना रुख किया तो उनकी नजर खार के लिंक रोड पर रहने वाली 29 वर्षीय ज्योत्सना चतुर्वेदी पर पड़ी। पुलिस जांच में पता चला कि ज्योत्सना एक चीनी गिरोह का हिस्सा थी जिसमें 2 प्राइवेट बैंक्स के अधिकारी भी शामिल थे। फिर क्या था? पुलिस को इन सब लोगों को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगी। पुलिस ने investify.com से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। निवेशकों को शुरुआती कॉल में +44 कोड आता था, जिस वजह से उन्हें लंदन से फोन आने की गलतफहमी होती थी। लेकिन साइबर पुलिस को शक है कि इस धोखाधड़ी को लंदन नहीं बल्कि चीन से नियंत्रित किया जा रहा था, क्योंकि कई बिटकॉइन स्कैम्स के तार चीनी माफिया से जुड़े हुए पाए गए हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मुंबई के इस कांड की मुख्य आरोपी ज्योत्सना चतुर्वेदी भी बिटकॉइन स्कैम को संचालित करने वाली चीनी मास्टरमाइंड के सीधे संपर्क में थी। तो दोस्तों, आए दिन होने वाली साइबर क्राइम की ये घटनाएं यही दर्शाती है कि कभी भी निवेश करने से पहले हम प्राथमिक रूप से सभी तरह की संभव जांच पड़ताल जरूर करें। हो सके तो निवेश करने से पहले किसी जाने पहचाने वित्तीय सलाहकार की सलाह भी जरूर लें। सतर्क रहने के साथ साथ अपना ख्याल रखें और ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. In our latest update on CBDC, the central bank digital currency news, we will be talking about the Bank of England's latest move to prioritize wallet-backed system for digital currency transactions. Later, we will cover Nigerian startup Cardify introducing digital wallet as a new mode of payment. But first, let's move to BOE, the UK's central bank, which is soliciting a proof of concept based wallet project to hold a central bank digital currency. The bank has clarified that no work has been done on a CBDC sample wallet and added that it will not develop a user wallet itself. Last Friday, the BOE posted a request for applications on the United Kingdom government's digital marketplace, a service where government organizations can solicit work for digital projects. Simple guidelines for what the proof of concept wallet would have to achieve were outlined, with basic functionality such as a sign-up process, updating details, and show balances and transactions, amongst other requirements such as displaying notifications.
Of course, the wallet also has to demonstrate it can be loaded and unloaded with the CBDC, along with being able to request peer-to-peer payments through an account ID or QR code, and can be used to pay online with businesses. The project will create a mobile app for iOS and Android. It aims to explore the end-to-end user journey as the BOE seeks to sharpen functional requirements for both the bank and private sector, along with making the CBDC product more tangible for internal and external stakeholders. BOE would spend $244,500 or 200,000 British pounds for an expected 5-month project to set the proof of concept, which it will evaluate with 5 suppliers. The bank is still to receive applications. The BOE previously stated it is seeking to launch a CBDC by at least 2030. The Chancellor of the Exchequer, Jeremy Hunt, shared a number of reforms to Britain's financial services sector, which included consulting on proposals for the establishment of a CBDC. Moving to West Africa, Nigerian startup Cardify Africa has introduced a new platform where Nigerians can be able to use crypto to pay airtime bill, mobile data bill, electricity bill and other types of bills. Cardify customers will need to validate their accounts by completing the KYC requirements on the platform for certain transaction thresholds. Cardify will charge a 0.5% convenience fee on the total bill paid to cover the cost of delivering and processing each bill payment, as those are not discounted by the provider or payee. That's all for today in this special story. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great day. विश्व भर में कई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे पूरी दुनिया में तेजी से अपनाया जा रहा है। दरअसल उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन, जो अपनी नायाब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से सुर्खियों में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रेज की वजह से देश और दुनिया में लोग इसकी खासियत के बारे में जान रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी को भारत की उन कंपनियों के बारे में बताएंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम को सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम TCS का है। रेवेन्यू के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इस तरह से कंपनी वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं और दूसरे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को विकसित करने के साथ साथ लागू भी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के अंदर TCS ने एक स्टार्टअप TCS क्वाड्स को विकसित किया है, जिसके जरिए से ग्राहकों को ब्लॉकचेन आधारित समाधान प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही भारतीय राज्य सरकारों ने TCS के साथ अलग अलग सार्वजनिक परियोजनाओं और नागरिक सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना पर चर्चा भी की है। लिस्ट में दूसरा नाम टाटा मोटर्स का है। ये टाटा समूह की एक दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सर्कुलर में निवेश किया है। इस निवेश के साथ जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR कंपनी की वेंचर कैपिटल और मोबिलिटी सर्विस आर्म को ज्यादा पारदर्शिता के साथ प्रीमियम मटेरियल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मुकेश अंबानी ने 2019 में रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में अपने एक बयान में कहा था कि उनकी ब्लॉकचेन तकनीक का फायदा उठाने की बड़ी योजना है, जिसके बाद ब्लॉकचेन के नजरिए से अगस्त 2019 में रिलायंस जियो ने हजारों नोड्स के साथ भारत के सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक को स्थापित करने की घोषणा की थी। उस मौके पर अंबानी ने कहा था कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के लेन देन के लिए पूरी सुरक्षा, विश्वास, स्वचालन और दक्षता प्रदान करेगा। जियो के पास कई न्यायालयों में लगभग 371 पेटेंट हैं। अकेले वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी ने 38 पेटेंट के लिए आवेदन किया और उनमें से 40 उन्हें हासिल हुए। ऐसे में पेटेंट द्वारा कवर किया गया एक प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र क्वांटम ब्लॉकचेन नेटवर्क टेक्नोलॉजी था।
इसके अलावा मुकेश अंबानी की रिलायंस ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए मेटावर्स में निवेश किया है, एक ऐसी आभासी दुनिया जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक शामिल है। आईटी कंपनियों को टेक्नोलॉजी अपनाने और पेश करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस सूची में इन्फोसिस का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह चाहकर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। इन्फोसिस की फिनिकल नाम से एक डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन है। फिनिकल एजवर्स सिस्टम्स का एक हिस्सा है जो इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी है। ऐसे में 2016 वो समय था जब एजवर्स सिस्टम्स ने अपना पहला ब्लॉकचेन सॉल्यूशन लॉन्च किया। फिर 2018 में एक दूसरे ब्लॉकचेन आधारित सॉल्यूशन फिनिकल ट्रेड कनेक्ट को लॉन्च किया। सरल भाषा में कहा जाए तो फिनिकल बड़े बैंकों को पुराने आईटी सिस्टम को आधुनिक बनाने में मदद करता है। इसके अलावा साल 2019 में इन्फोसिस ने सरकारी सेवाओं, बीमा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए 3 ब्लॉकचेन संचालित वित्तीय एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। टाटा स्टील टाटा समूह की एक और दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन को अपनाया है। इस साल अप्रैल में टाटा स्टील ने HSBC के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड ट्रांजैक्शन को निष्पादित किया, जिसके बाद स्टील की दिग्गज कंपनी और UAE आधारित कंपनी के साथ व्यापार वित्त सौदे को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ टाटा स्टील ने दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के अवसरों का पता लगाने के अपने इरादे का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील का मानना है कि ब्लॉकचेन खनन और धातु कंपनियों के लिए कार्बन उत्सर्जन का पता लगाने में मदद कर सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने का आदेश दिया है। टेलीकॉम सेक्टर में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल स्पैम कॉल्स की समस्या से निपटने में मददगार होगा। साथ ही साथ ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने से ऑफिशियल अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज्यादातर कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इंडियन टी बोर्ड संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की योग्यता को बढ़ाने में मदद करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने की योजना बना रहा है। दरअसल मिलावट के कारण टी बोर्ड ऑफ इंडिया को उत्पादित होने वाली चाय की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से हर कदम पर रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। इससे जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और अधिकारियों को समस्या क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुलझाने में भी मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को अभी देश के भीतर मौजूद कई उद्योगों द्वारा अच्छे से समझना बाकी है। ऐसे में गलतफहमी है कि ब्लॉकचेन हाल के सिस्टम की जगह ले लेगा, जो कहीं न कहीं सच हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी तरह से ब्लॉकचेन की ज्यादा प्रयोज्यता हमें दिखाती है कि ये लंबे समय तक रहेगा। भले ही देश में ऐसे व्यवसाय पहले से हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं और आने वाले समय में ये ट्रेंड जारी रहने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वेब3 की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.o के इस खास शो टिप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन कई बार इसे कम समय में पूरा करने का जुनून घाटे का सौदा साबित होता है। ठीक उसी तरह से जैसा बॉलीवुड की फिल्म हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल के चक्कर में अक्षय कुमार, परेश रावल से लेकर सुनील शेट्टी देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। यानी बाबू भैया, ज्यादा लालच करोगे तो यूं ही फंसोगे। क्रिप्टो की दुनिया ने जिस तरह से तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, ठीक उसी तरह से पिछले कुछ सालों में पॉन्जी स्कीम्स में भी उछाल देखने मिला है। सबसे ज्यादा 2016 के बाद से कई शैडी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को इन्वेस्टर्स को धोखा देकर फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में पॉन्जी स्कीम जैसे स्कैम के बारे में ज्यादा जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो,
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉन्जी स्कीम की डेफिनेशन। तो पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें ऑपरेटर या ऑपरेटिंग कंपनी बिजनेस के मुनाफे के बजाय नए इन्वेस्टर से आने वाले नए कैपिटल से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पे करती है। इतना ही नहीं, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के मुकाबले कम समय में ज्यादा रिटर्न देने का ऑफर देकर पॉन्जी स्कीम अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी आसानी से अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब होते हैं। पॉन्जी स्कीम्स खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण इस सेक्टर में रैंपेंट हो गई है। स्कैमर्स को सेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी अथॉरिटीज को दरकिनार करने में सक्षम बनाती है, जिससे वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकचेन सिस्टम का इम्यूटेबल नेचर फंड ट्रांसफर को इरिवर्सिबल बनाता है, जो स्कैमर्स के पक्ष में भी काम करता है, जिसे पॉन्जी विक्टिम्स के लिए अपना पैसा वापस पाना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। क्या है पॉन्जी स्कीम्स नाम के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। पॉन्जी स्कीम का नाम आते ही सभी के दिमाग में स्कैम्स और हैकर्स के जुड़ी बातें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इस तरह की ठगी को कुछ और नाम ना देकर पॉन्जी स्कीम ही क्यों कहा जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए शॉर्ट में इस कहानी को आपको सुनाता हूं, जहां आप जान जाएंगे कि किसने किया था पहला पॉन्जी स्कीम स्कैम, कितनी की हुई थी ठगी और कैसे पड़ा ये नाम। बताया जाता है कि पॉन्जी स्कीम फ्रेज की शुरुआत साल 1920 में तब हुई जब चार्ल्स पॉन्जी नाम के एक ठग ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिटर्न्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी। पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को 45 दिनों के भीतर 50% तक या 90 दिनों के भीतर 100% इंटरेस्ट देने का वादा किया था। इस तरह से लोगों का भरोसा हासिल करते हुए पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स के पहले ग्रुप को वादा किया गया रिटर्न दिया था, लेकिन उन्हें असल में इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो असल में दूसरे इन्वेस्टर्स के थे। एक जाल था जिसे पॉन्जी ने अपने नए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यानी फंसाने के लिए बुना था, और इस तरह से पॉन्जी ने सभी के आंखों में धूल झोंकते हुए $20 मिलियन से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि पॉन्जी इस तरह की ठगी को अंजाम देने वाला पहला ठग था, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई थी, लेकिन जिस चीज ने इसे अलग बनाया था वो था इसका बहुत बड़ा पैमाना, और इस तरह से इस ठगी की टेक्निक को इसके नाम पर रखा गया। किस तरह से नकली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है, आइए देखते हैं। शॉर्ट में बात की जाए तो ये एक पॉन्जी स्कीम फेक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है जो अपने क्लाइंट्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफे देने की लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। ये स्कैमर्स को इस तरह के फ्रॉड स्कीम चलाने और नए इन्वेस्टर्स को लुभाने में मदद करता है। कहा जाता है कि पॉन्जी स्कीम्स को सस्टेनेबल होने के लिए कैश फ्लो की लगातार जरूरत होती है। ये स्कीम आमतौर पर तब खत्म हो जाती है जब नए रिक्रूट्स के नंबर्स में कमी आने लगती है या जब इन्वेस्टर्स साथ में अपना पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शंस चुनते हैं। आइए देखते हैं पॉन्जी स्कीम्स के कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, बर्नी मैडॉफ। पॉन्जी स्कीम्स को कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कितने साल के इन्वेस्टर्स को उसके जरिए धोखा दिया जा रहा है, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसा ही एक मामला वॉल स्ट्रीट ब्रोकर बर्नी मैडॉफ का है, जिसके द्वारा चलाया जा रहा है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस लगभग 20 साल पुराना पॉन्जी स्कीम था। मैडॉफ ने इसकी मदद से लोगों से कई बिलियन की ठगी की थी। हालांकि मैडॉफ का भांडा विसल ब्लोअर हैरी मार्कोपोलोस ने फोड़ा था। नंबर 2, JSG कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिटर्न के नाम पर कैलिफोर्निया के रहने वाले 2 शख्स ने हॉट प्री IPO स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बदले मुनाफा देने का वादा किया था। हालांकि सच तो यह है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कभी की ही नहीं गई थी और इस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया था। क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम का कैसे पता लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। हालिया वर्षों में क्रिप्टो मार्केट में अब ट्रेंड के साथ पॉन्जी स्कीम्स के नंबर्स में तेजी देखने मिली है। इस तरह से जानना बहुत जरूरी है कि पॉन्जी स्कीम को आखिर कैसे स्पॉट किया जा सकता है। तो आपको रखना चाहिए कुछ बातों का ध्यान, जैसे नंबर 1, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न के वादों के जाल में खुद को फंसने से बचाएं। नंबर 2, रजिस्टर नहीं किए गए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान न दें। नंबर 3, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करने वालों से हमेशा दूर रहें। नंबर 4, पॉन्जी स्कीम्स में होता है सेंट्रलाइजेशन का हाई लेवल। नंबर 5, पॉन्जी स्कीम्स में मौजूद होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो पॉन्जी स्कीम से जुड़ी स्टोरी के पहले पार्ट में बस इतना ही। पार्ट 2 के साथ लौटते हुए हम कुछ जाने माने पॉन्जी स्कीम्स पर नजर डालेंगे और साथ ही डालेंगे इनमें मौजूद सिमिलैरिटी पर एक नजर। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।
मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. So, Metaverse has opened a whole new spectrum of opportunities for investors, innovators, developers and entrepreneurs like never before. And globally, companies like Facebook, Epic Games, Roblox Corporation, Nvidia and others are already investing heavily in creating a metaverse. Well, India has a massive role to play in leading the metaverse revolution. So today we have invited Mr. Krishnan Sundararajan, who is the founder of India's first metaverse app, Loka. He will share insights on building an Indian metaverse. Welcome to 3.0 TV, sir. Thank you, Vishaka. Thank you for having me. It's a pleasure coming here and talking. It's a pleasure to have you, sir. So, sir, metaverse is opening up transformative opportunities. Do you think that India is a conducive place for the growth of metaverse? I think India is the perfect place to be right now when it comes to the metaverse, especially because the gaming sector, the gaming industry in India is booming. Why is it booming? Because we have the highest number of gamers, we have one of the highest number of mobile users, and they've started to pay as well. So traditionally, we've been in a country where gamers would come, play, but not pay for the game. Now that's changing. And that creates an environment where the demand already exists, but the supply is also starting to come in. And this is becoming like a utopian world when it comes to creating a metaverse gaming environment. So, what do you think? What, according to you, needs to be done to create an ecosystem for India which becomes completely sustainable and flourishing for everyone? And how do you think we can make India's metaverse industry basically more sustainable? Great. I think that's a wonderful question. I'll tell you why. Because, as I said, India always had the demand. India didn't have the infrastructure to start with. Now that has changed, especially with 5G coming in, with faster mobile phones coming in, with the Indian per capita increasing. Now more and more people are now exposed to metaverse, and that's the demand part. What happens to the supply part? Traditionally, we had developers who would develop in, let's say, Java, backend developers, web developers, app developers, but we didn't really have game developers as much. Now all that is changing. Why? Because the gaming industry is moving from the West towards the East. You will see a lot of companies delegating some of their work. Ubisoft does it, EA Sports does it, to Indian game studios. And now game studios have started to feel that it's their time, and they've arrived on the scene, and they've started to create their own games, own environments as well. So we've had the demand. We are working on the supply, and what remains here is the customer who is willing to pay for the entire platform, the entire product, and that has also changed. So I believe that the thing that already existed was demand. Supply is something that's almost sorted. The in-app purchase, the customer paying for the services, that is yet to come in. And I believe that with the trend that's setting in, that will also come in and create a sustainable environment for everybody. Absolutely. And there are so many sectors which can leverage the opportunity at this time, be it manufacturing or e-commerce. So if a medium-sized e-commerce retail or say any other company wants to build a metaverse platform, what would be the work pipeline of developing, or what would be the cost of a platform like this?
And I'm going to deviate a little from the topic and just give you an answer by putting a question even before that. One of the questions that a lot of companies don't ask is, what am I going to expect as an outcome out of this exercise? So that needs to be sorted first. And then let's say that's sorted. The second thing they need to figure out is, what is the kind of device I'm targeting this on? Am I targeting this on a PC or an Oculus or a VR device, a mobile or a console? Once that is sorted, then comes, am I going to choose a platform that already exists, like Fortnite, Roblox, Decentraland, so on and so forth, Loka, so on and so forth, or am I going to build it on my own? If I'm going to build it on my own, then you choose either a Unity or an Unreal platform, an engine to develop this. So this roughly takes 30 to 50 days to create a metaverse-like environment. And even though this is very case to case, but I would say that the cost would vary anywhere between, let's say, a 5 lakh to maybe 20-25 lakhs. So you started your answer by saying that instead they should ask that what are we going to get out of it? So a lot of investors are optimistic about metaverse, but they still struggle that how much revenue it will generate. So what are your views on this, and how do we convince investors basically that it is the future, and when do you think that metaverse startups will start making money? Great question again. I think one of the things that I'm extremely bullish on is the fact that metaverse is going to not only replace offices, not only replace, let's say, movie halls, dating centers, but they will replace reality. And that is how bullish I am on when it comes to the metaverse. And I believe this will take place within the end of this decade, probably within the end of 2030. And the reason why I say this is because as humans, as a species, we are trained to explore in a 3D space. We are not trained to maybe go on a Zoom, talk to each other using small boxes. We are attuned to being in a 3D space, meeting somebody, shaking their hand, sitting right across the table and talking to each other. And that's the kind of internet everybody wanted, everybody deserves. And that's the kind of internet metaverse is going to create. And as far as money is going to come in, right now we are at the infancy stage. We've just taken birth. We're just exploring the world, trying to make sense of how the metaverse is to be created. I think by the end of 2030, we would probably be in our teenagers. We would have some idea of what the metaverse will look like. And by, let's say, 2035, we will really come on our own and make metaverse replace reality. And when that happens, when the world starts living on the metaverse, the economy that exists on the internet suddenly ports to the metaverse. And I believe this is going to be a multi-billion dollar, if not $1 trillion industry in the next 10, 15 years. Yeah, so it is being said that according to various reports that metaverse is going to be a $13 trillion to $18 trillion market opportunity by 2035, of course. So companies are betting big on metaverse. Along with this, countries are too betting big. And if we talk about Dubai, so Dubai is becoming the center of Web3, with country having its own metaverse strategy. So where do you see Dubai in the next 5 years? I think Dubai is going to be a center of metaverse development and interaction, because again, as far as Dubai is concerned, it's one of the first movers in the industry, and that will definitely give them an advantage. We will see the Dubai model getting copied by a lot of other countries that probably succeed the race, and they will take examples of what Dubai did right and start incorporating that into their system. So Dubai has an important role to play here, especially because it's the first mover, and it will definitely reap the reward for it as well. So you claim that Loka is India's first metaverse app. Can you share details on user base, your projects, and other commercial data on your project, including investments and tie-ups? Sure. So we've been very fortunate that we've just launched this year on January 3rd,
We've been fortunate to have around 3.5 lakh unique visitors on our platform. We're available on mobile and PC. These users are traditionally of the age group of 15 to 25, spend roughly 13 minutes every day on the platform. They meet friends. They find the love of their life. They play games together, watch concerts, and a bunch of stuff. As far as partnerships are concerned, we work with some of the biggest companies. We were fortunate to conduct India's first K-pop concert on the metaverse with Boat. We did something, a town hall with HDFC Ergo. We're doing India's first cookery show very soon, followed by India's first reality TV show very soon. I'm not at the liberty of telling you the brand, Okay. but that will happen by the end of February. Wow. And as far as commercials are concerned, I think we started making revenue in the month of June. We're clocking extremely good numbers. We were thinking of finishing the year at 2 crores. I think we will be crossing that within the end of financial year. Wow. So best wishes to you for all your future endeavors. Thank you so much. Yeah. Metaverse is the future of internet, but what do you think is going to be the future of metaverse? Oh, that is wonderful. I think the future of metaverse is I can sort of subdivide it into 2 categories. One is virtual worlds. So we will have companies like Loka, like Fortnite, Roblox, and the rest creating virtual worlds that are highly immersive in nature, where especially Unreal Engine 5 coming in, you will be in a world where you will sort of not be able to differentiate if what you're seeing is real or if it's virtual. It will be hyper realistic virtual worlds. That's one. Second are haptic devices. So when 5 senses of your body get engaged, currently with a VR device 2 senses get engaged, your eyes and your ears. When 5 senses get engaged, being in a hyper realistic world, wearing gadgets that help you sense the environment will help you replace reality in general. And that is what I think is going to be the future of metaverse: hyper-realistic worlds, haptic devices to sense those hyper-realistic worlds. Wow. So being an early adopter, would you like to give any advice or message to the future or the current developers who are trying to create a very good or a very nice metaverse platform? So I think one advice that I would definitely like to give is, and that's something very simple, very effective, is the fact that focus on localization. Because as a gamer, as a player, as somebody who's working in it, I realize that users don't want to consume content on the metaverse, on a virtual world that is based out of New York, that's based out of Berlin, that's based out of London. They want to feel like they're in Mumbai. They want to feel like they're in Delhi. They want to go to a Pani Puri wala. They want to meet somebody wearing clothes that are available in their home market. They want to see cars that are available in their market. So create localized experiences for the public, for the consumers who reside in your respective countries. So that's a big thing that one needs to focus on. Apart from the fact that keep upgrading and creating amazing, cool stuff that they already do. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Likewise. Thank you. So this was Mr. Krishnan Sundararajan, founder of India's first metaverse app, Loka. He shared insights on building an Indian metaverse and the future of metaverse. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Thank you.
नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। 3.o के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि फार्मिंग, इविल ट्विन और वॉइस फिशिंग अटैक्स को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। अगर पिछला एपिसोड आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर जरूर देखें। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एसएमएस फिशिंग, डीएनएस हाईजैकिंग और फिशिंग बोट्स अटैक्स किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएमएस फिशिंग अटैक। एसएमएस फिशिंग को स्मिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक में ईमेल के बजाय टेक्स्ट मैसेजेस का उपयोग किया जाता है। स्मिशिंग अटैकर्स अपने विक्टिम्स को बड़ी चालाकी से उस तरह के मैसेजेस भेजते हैं जो ऑफिशियल बिजनेस मैसेजेस के समान दिखाई देते हैं। इन एसएमएस में लिंक होता है जिसमें आपके लॉगिन की जानकारी मांगी जाती है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं और लॉगिन की जानकारी देते हैं, अटैकर तुरंत ही आपके अकाउंट पर काबू पा लेते हैं। डीएनएस हाईजैकिंग। इस तरह के अटैक में एक वैलिड वेबसाइट को टारगेट किया जाता है। इन वेबसाइट के डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के एंट्रीज यानी ओरिजिनल आईपी एड्रेस को बदलकर बोगस वेबसाइट का आईपी एड्रेस एंटर किया जाता है। फिर जैसे ही आप वैलिड वेबसाइट को एंटर करते हैं तो वो सीधा आपको एक फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। आपको बता दूं कि डीएनएस आईपी एड्रेस को चेंज करके और राउटर पर नियंत्रण पाकर एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैलवेयर से संक्रमित किया जा सकता है, जो कि कोई बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। फिशिंग बोट्स। फिशिंग बोट्स एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें ऑटोमेटिक फिशिंग अटेम्प्ट करने के मैक्रोज सेट किए जाते हैं। इस तरह के फिशिंग बोट्स का उपयोग फेक वेबसाइट्स को डेवलप करने और सर्वर्स पर होस्ट करने के लिए किया जाता है और साथ ही इन फिशिंग बोट्स का उपयोग बल्क फिशिंग ईमेल्स करने के लिए भी किया जाता है। ये फिशिंग बोट्स इस तरह से प्रोग्राम होते हैं जिससे आपकी लॉगिन डिटेल्स और प्राइवेट डाटा को ऑटोमेटिकली चुराया जाता है। इन फिशिंग बोट्स का उपयोग स्पैमिंग और डिनायल ऑफ सर्विस जैसे अटैक्स के कंजक्शन में भी किया जाता है। तो अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फिशिंग अटैक्स के बारे में जानकारी लेंगे। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए 3.o और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। How long it will take before cryptocurrencies has the same importance, ease and equal amount of value as the fiat currencies. So I am Manoj Dara and you are watching this special story on 3.o TV. Money is not what cryptocurrencies are. A cryptocurrency is a software program that consists of tokens or units that can be safely and securely transferred from one owner to the other. The publicly accessible, broadly displayed database called a blockchain stores transactions. So according to economists from the Bank of International Settlements, which is BIS, the use of public blockchain leads to fragmentation, which implies cryptocurrencies will never be a suitable form of payment. The BIS analysis claimed that when the number of transactions per block approaches its limit, the cost of transaction increases, driving the consumers to seek out alternative blockchains. So BIS is an organization that represents the world's main central banks. So, according to them, this fragmentation means blockchain cannot harness the beneficial network effect associated with the traditional money. So, this is something, an important point. Please keep an eye on this. So, does it mean that the basic fundamentals of money are we going to experience? So, cryptocurrencies do not adequately meet the functional requirements of money, and economists believe that the money performs three basic functions such as store of value, medium of exchange, and the unit of account. So what is store of value? We will discuss this. People feel comfortable holding their wealth in it. So despite the fact that many individuals own Bitcoin, its frequent significant price swings make it particularly risky investments for storing one's wealth, isn't it? So due to a number of issues including rising interest rates,
the collapse of Terra Luna and the implosion of FTX, the market capitalization of cryptocurrencies has fallen from $3 trillion level, which is actually reached to under $1 trillion as we speak. So the second point which we're trying to explain is the medium of exchange. Even though several well-known businesses including Microsoft, PayPal and Starbucks have begun to accept cryptocurrencies as payments, many others still do not. For example, if we take an example of PayPal, one of the largest payment processor in the world, PayPal, has announced that it will be accepting Bitcoin and other cryptocurrencies as payments starting in 2020. So, however, if a user chooses the cryptocurrency as the funding source, the cryptocurrency will be instantaneously converted into fiat money and the payment will be made to the PayPal merchants in the fiat money. So please remember this. This demonstrates that the fiat currency, in this case, the US dollar, is a medium of exchange and the cryptocurrencies are not. Dollar and the other currencies are legal tender which must be accepted if offered in payment of a debt. Cryptocurrencies are not. Our third point is a unit of account. Even as investors or a trader who have a great success trading Bitcoin refer to their money in dollars rather than Bitcoin. Dollars, not Bitcoin or other cryptocurrencies, are used to measure the size of cryptocurrency marketplaces. So while Bitcoin may serve this function someday, it doesn't yet. So overall, if we talk about cryptocurrencies can be used to purchase goods and services, however, they are not generally accepted as a medium of exchange. Cryptocurrencies are also a poor store of value given their volatility, few market participants opine. Further, the unstable nature of cryptocurrencies, including the so-called stable coins, undermines their function as a unit of account. So imagine being unable to budget your lunch if you went out to your favorite restaurant every day and the price of your meal is fluctuating in Bitcoin. Thankfully, the cost of your food is displayed in the currency you earn or you accept while you are traveling, such as the dollar, which is the real money. Thank you for watching this special segment on 3.0 TV. This is Manoj Dara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates. Thank you. Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The metaverse has long been gaining traction in both the digital and the real world. The idea of humans interacting with each other in the virtual world using 3D avatars offers several opportunities to users, including in the fields of cryptocurrency, non-fungible tokens, and more. However, as per a study, the immersive virtual world, which is expected to grow to a $679 billion industry by 2030, also poses several risks in terms of trust and safety concerns. The metaverse is attracting large investments from technology giants such as Google, Meta, Microsoft, and Nvidia to make the virtual world a reality. As organizations develop their business strategies for the metaverse, trust and safety issues need to be among their foremost considerations. As the metaverse is expected to grow in the coming years, the enterprises will have to face challenges like ensuring the safety of virtual assets, managing data privacy, and preventing the abuse of online avatars. Tackling these novel challenges will require a collaborative approach among enterprises, academia, policymakers, and trust and safety service providers to harness the full potential of metaverse as an immersive yet safe place for users. So with the growing popularity of the metaverse comes the challenges too. Yes, metaverse comes with its own set of potential challenges that will require attention as countries explore the utility of this technology. Now let me tell you about these challenges. The first major challenge is safety. Even before the rollout of Meta's metaverse globally, in its VR social media platform Horizon Worlds, an assault on a beta tester cautioned people about the ugly side of the technology.
Since metaverse blurs the line between virtual reality and reality and is unsupervised and unregulated to a great extent, harassment can take place in the virtual world. The first report of a VR-related death has come from Moscow, where a 44-year-old died after falling through a glass table while wearing a HMD headset. A South Korean man was recently sentenced to 4 years prison for storing sexually exploitive content of minors he lured on the metaverse. So with the increased engagement of people in immersive technology, early safeguarding of users will benefit the individual users and platform and address the trust deficit. Companies working in the immersive technology domain can be incentivized to create more applications for a safer environment in the metaverse, which will allow a wider demographic of users to experience the technology. Now, as the metaverse is considered to be an attractive entertainment feed for children, it will be a massive challenge to keep them safe as they use the technology. Unsupervised time in the open social metaverse can expose them to abuse. In the US, research by the Center for Countering Digital Hate published in December 2021 on Facebook's VR Metaverse app shows that in the metaverse, children are more prone to abusive behavior, including bullying, being forced to repeat racist slurs and extremist talking points, and being exposed to traumatic experience like threat of violence. Indeed, even adults are not immune to the dangers that VR can cause, as the line between reality and the virtual world is blurred. Second, interoperability and privacy. So another challenge is the risk that the metaverse will be controlled by a few big tech companies like Google, Amazon, Meta, Apple, and Microsoft. The economics underpinning metaverse will then be linked to the capture of user data, and conservation of privacy will be a massive challenge. Third, assigning accountability. So assigning accountability in a metaverse platform is difficult as the technology transcends geographical boundaries. And to deal with the challenge of content moderation, for one, 4 main areas can be considered in governance with special focus on accountability, individual, community, platform, and government. Metaverse will produce data captured at a higher level like gaze, gesture, speech, and biometric data. Now, this private information needs to be localized, and their storage will be a task which the state needs to handle. Fourth, data security. Sharing of data across boundaries for processing can pose a threat to national security, as the metaverse can be used as a platform for recruitment by terrorist groups and for radicalization, extortion, and social polarization. So data through the metaverse can lead to fraud and identity theft. For example, by hacking VR headgear or glasses, hackers can steal personal information. Fifth, cyber syndrome. Open issues of metaverse include high computation power, leading to higher electricity usage and the experience of cyber syndrome. NFT and blockchain technology in the metaverse economy require high computation for maintaining the ledger and validating it. In blockchain technology, the mining process in itself consumes a lot of electricity and has an environmental impact as they use high-end computation. So with the development of immersive technology and smaller and portable devices, there will be a rise in cyber syndrome cases as more people would likely be spending long hours on Web 3.0. Focus on regulatory challenges. So this is a new challenge for intellectual property rights will arise with the metaverse. Ownership of art and properties in the real world is a different domain from that in the virtual, and this has to be protected so that the animation, visual effects, gaming, and comics industries can thrive. So NFTs can raise legal concerns over intellectual property ownership and rights. And due diligence on the terms and smart contract that is a part of the NFT transaction needs to be exercised to avoid IP theft. So as of now, India is largely unequipped to deal with the issues arising from metaverse technology. And balance needs to be maintained between data and sharing with trust and data to be processed within the geographical boundaries of a country. Limitations on data sharing and processing can hinder the development of metaverse and might slow down the growth of technology. So the possibilities offered by the metaverse can be limitless. Metaverse might take time to reach its full potential, but if achieved,
it can be a wellspring of new business opportunities. And with increasing technological influence and demographic advantage, India has the opportunity to make the most of the metaverse. But to allow early adoption of metaverse, the Indian gaming industry and regulations introduced by the government have to be in sync, and only then metaverse will offer a safe space for all. Well, that's it in today's episode. This is Vishakha signing off. To know more about such interesting topics, keep watching 3.0 TV. And for instant updates, do not forget to press the bell icon. So primarily the entire chain of events started in 2021 when the USDT claim was questioned whether they are really backed by the dollar or not. So US government has questioned them. After that, the series of events has happened from Luna, and now the FTX case is there. So primarily the impact is definitely significant in part where people want to launch their project into different exchanges like Gate.io and the KuCoin basically. So these are also getting impacted by this. So definitely the upcoming projects are getting impacted by the entire event. Also, the investors' confidence has been impacted, like whether they want to invest in the project which is like quite famous or quite popular in the media or probably in the space. All of this has definitely had an impact on the investor sentiment, specifically when it comes to retail investors and more specific to first-time users who kind of getting into the Web3 and cryptocurrency space. If you look at the overall traction, what we have seen, the journey has moved from crypto to Web3. We are taking the overall ecosystem to the reality of actual use cases of blockchain out there and other emerging technologies. Today, governments are also now embarking how Web3 could be the ecosystem for their citizens. Example, Telangana state has recently announced sandboxes, right? Or even academia is also now adding their courses into their curriculums. We have seen how Web3 works. Web3 University is really embarked and working with 100 plus institutes to really create a next level of talents out there, right? So I think the rise of a new company, startups or big tech companies are now adopting blockchain as a prominent business model. So I think last 1 year was exciting enough to really give a edge or a drive for a next couple of years. So in 2022, it was very crucial that FTX crash and cryptocurrency crash, but in 2023, I can hope that there will be the recovery of the cryptocurrencies and the mass adoption of the blockchain and the further utilities and developments in the CBDC, which is a central bank digital currency, and that will enter in new phase, and there will be the many more. So congratulations 3.0 TV for covering one successful year of Web3, NFT, Metaverse and blockchain and many other various sectors. I think this year 2022 was the year of cleansing, where the bad weed of Web3 were taken out, the ones that were gimmicky, the ones that didn't sort of perform in the right ethics were taken out, and this was the year of cleansing. The year 2022 was a fantastic year for Metaverse. Facebook changed its own name to Meta. Many devices have been launched this year. Many AR/VR apps and games have been launched this year. Many businesses have developed pilot project in Metaverse and AR/VR space. You name it. Almost all the big companies have done something in AR/VR space. They have accepted that Metaverse is a new normal and they have to adopt it to be relevant. That is the most important part. Now, intangibly, the Metaverse has got the biggest impulse this year. Thank you. 2022 was a great year for Metaverse industry. The industry gained a lot of attention post May 2022
after Facebook was renamed as Meta. That one video of the CEO changed everything for the metaverse industry. Thousands of new metaverse startups were made alone in India. Some of them have already gained recognition, and a lot of them are in their beta phase. 2022 has seen a lot of ups and downs. If you see from a crypto perspective, the prices has gone down. There has been quite a few hacks on the blockchain bridges and few decentralized, few smart contracts that have been hacked. In addition to that, we have seen Terra Luna fail, and then FTX and BlockFi, and quite a few centralized lending organization and centralized wallets or exchanges failed. So some of these have been out of breach. Some of these have been out of mismanagement of funds, how they are redeploying the funds. So if you over leverage, of course, there are chances whenever the prices of the asset will go down, it would be difficult to manage the balance sheet. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The gaming industry is the center of metaverse today, and tech giants are betting big on it. According to a report by Valuates, gaming-led global metaverse market can reach $28 billion by 2028. So today we have invited Mr. Saurabh Gupta, who is the co-founder of online gaming metaverse platform Tamasha Live. Welcome to 3.0 TV, sir. Hello, thank you very much for making me part of the show. Would love to share my insights and let's take it forward. It's a pleasure to have you, sir. So, sir, as I mentioned, according to a report by Valuates, gaming-led global metaverse market can reach $28 billion by 2028. So, how does this relate to India, or what do you think that would? How big is the Indian market opportunity, basically? So, I think. If we talk about India, the overall gaming market is in a very nascent stage right now, right? There is far more, opportunity or scale that can be achieved. I think a week back, India surpassed other countries to become second, highest, country with most number of players, gamers in the world, right? After China. So that is quite exciting. So we have a lot number of players, out there. They just need, right games, products, and opportunities to, monetize, right? And this shows that there is a huge opportunity out there, not just for Web3 games, but also for in general the gaming industry, right? So currently we see, the gaming industry is of size more than $2.5 billion and would reach around $8.9 billion in the next 5 years. So this is the overall gaming, right? And out of that, there are multiple segments. There is real money gaming. There is, people pay for playing games through subscriptions. Games. True. Yeah. So the Web3 segment is very, very small compared to the overall gaming space. Even in the next 5 years, real money gaming is going to dominate the space, which would be more than 50%. But how I see Web3 games or, metaverse fitting in this is, basically, integrating with the existing gaming ecosystem, right? So let's say if you talk about games like PUBG or Free Fire, right? There are a lot of virtual assets, but most of these virtual assets that are out there, they are in Web 2, right? So if you buy a gun on PUBG, you won't be able to truly own it. So whenever, PUBG shuts down their service, you will leave all the assets that you have collected, right? So how I see gaming is going to evolve, or basically metaverse is going to evolve in gaming, is basically fitting in the existing gaming ecosystem. So esports is growing at a very fast pace, in India. The real money gaming space is growing. Casual gaming and hyper casual gaming market is growing at a very good pace. And we will see the component of metaverse and Web3 gaming is going to fit in the existing Web2 gaming ecosystem. So that's how I see the space is going to evolve. So, companies are betting big on metaverse. If we talk about Meta, Apple, Google, so
Likewise, countries too are betting big on metaverse. So Dubai, Korea, Singapore, they all have their metaverse strategies going on. So where does India stand when it comes to strategy? And do you think India has a massive role to play in leading the metaverse revolution? Definitely. I think India is a powerhouse of resources, right? So when IT sector was shaping up, right, India was, one of the leading country to provide all the resources, human resource to the entire world, right? And right now, India is leading in terms of, being the IT powerhouse for the entire world. Right. True. Similarly, it happened with SaaS as well. Right. The SaaS industry grew exponentially. Companies like Zoho, they became a global company. Right. And similarly, we'll see that in the coming years, India would be providing a lot of resources, to develop high quality games, to create animations and other things that are the technology infrastructure. Right. So there I see that India would be leading. In terms of providing the technology and infrastructure to the world. So as you said that India would be leading in terms of providing the technology, it is being said that Chennai is all set to become a hub for metaverse in India. So what are your views on this? So I think it's very early to say. Definitely, I think in Chennai, there are a lot of Web3 companies, metaverse companies, AR, VR companies that have popped up, right? And, this happens, whenever there are certain companies that are coming up in a particular locality or area or a city, a lot of other companies started setting up their base there, right? But since the gaming industry is in a very early stage, we'll see that over the time that which city, or which part of the country will emerge out as a major, place for metaverse, companies. So right now we are seeing that a lot of early companies are there in Chennai, but Bangalore is also doing good, right? In Gurgaon also is growing really well in terms of technology companies. So what I see is that over the time, if we'll see a big corporate coming out of India from a particular locality, from a particular area, there we will see that particular city going to evolve, right? So something similar happened with Bangalore as well. When Infosys came, Wipro came there, TCS came there, and the entire ecosystem developed there, right? So right now, most of the companies that are there in Chennai, they are startups, right? If we see a big corporate emerges, out of Chennai or maybe any other city, we will see the entire ecosystem starts developing there because then employees will start, setting up more startups there, right? That's how the ecosystem grows, right? So that's my thought. Very true. So let's talk about your platform, Tamasha Live. So can you share some details on user base, projects and other commercial data on your platform, including some investments and tie-ups? So Tamasha is a 2-year-old company founded by me and Siddharth. Both of us were graduates from IIT Bombay. And I have been in the gaming space for quite some time. And Tamasha is something which we started, with a vision to create a metaverse of gaming, a virtual place where people can play their favorite games, they can make their friends, they can be a part of communities, they can buy interesting NFTs and things like that, right? And initially we started, developing on Web 2 because that is the interface that is most familiar with most of the people, right? Currently, the interfaces in Web 3 are a bit complicated. It's not very easy for everyone to log into MetaMask, right? So we created the entire ecosystem on Web 2. There are thousands of influencers on Tamasha who run their communities and clubs, right? And there are more than 1.5 million users on Tamasha who transact a few crores a month, right, on the platform. And there are multiple games, so we are building a 3-way ecosystem where we are helping game developers to publish their game on Tamasha and monetize through it. We are helping creators to monetize, right? So any creator can start their club and they can, start earning on Tamasha by making their community people play games, through tournaments and all. And then there are players who can make friends, enjoy games within their community and, be a part of the ecosystem, right? Wow, that's interesting. So there are so many sectors which can leverage the opportunity at this time, be it manufacturing or e-commerce. So say if a medium-sized e-commerce retail or any other company wants to build a metaverse platform like yours, so what is the work pipeline of developing or what would be the cost of a platform like this? So for an e-commerce company, I would see they can start taking some steps in this direction,
So currently, most of the e-commerce that happens, right, it's on mobile phones, right? Virtual reality headset are not accessible to everyone, right? So there, augmented reality can play a very interesting role. So right now, I'm seeing a lot of interesting companies that are coming up that, you can just switch on your phone, and on your phone camera, you can see the entire furniture in your room. You can place different furnitures in your room, and you can decide that which furniture will suit you best, right? Similarly, there are try-ons. If you must have seen on Lenskart, you can try out, glasses on your face, right? That is also part of, the virtual ecosystem that will develop over the time. But right now, whatever is accessible to everyone, people should develop, products over that, right? So rather than developing on virtual headsets, people should develop these interesting products and tools for utility on mobile phone, right? So I see augmented reality can play a very interesting role to create those experiences for purchasing, right? So those kind of products, I think, people can build and innovate in the e-commerce space. So since we spoke about the developing ecosystem, so developer hiring is quite painful or difficult as there are very few developers in AR or VR or the 3D space. So how can this be solved, sir? I think it will take time. Government is taking their step. Recently, government has set it up a committee for gaming and animation to promote that, right? And soon we will see that a lot of universities and colleges, they will start providing, major courses and all in this space. And once we have resources, once we have, high quality educations, once we'll see a major degree in IITs, on gaming, right? Then I think ecosystem will automatically start developing, right? So it will be time taking. We'll see it develop over the time. And secondly, once the requirement starts coming up, right? So there will be a lot of gaming companies outside India that have a lot of requirements for resources. So even if they are not getting formal education in gaming, they will start learning by themselves, right? Taking some diploma courses or, learning on their own on the internet, right? So in the next 5 to 10 years, I'll see, that a lot of game developers, animators will start coming out of India and will provide these, their expertise to the entire world. True. So how do you think digital identities are going to kind of shape the metaverse forward? And what is the overall view of the NFT sector? And what do you think is going to be the future of the NFT sector? So what I've been observing, for the last, a few years, last couple of years, is that the new generation, the younger generation that is coming up, they are getting very much attached to their virtual identity, right? So right now I'm in my hometown and I just, talked to my father's driver, and he was, his salary is around 15,000 and he's spending around 2,000 rupees a month on Free Fire virtual assets, right? Can you believe this? Wow. So that is the kind of value people are perceiving in virtual objects, right now, right? And he is of age 23 years, right? So this is what is happening, in front of our eyes, and we are not seeing it. But in the next 4-5 years, we will see that the entire world will change, dramatically, with this attachment of people to this virtual assets. Me and you can see in this virtual space is that the social network, right? Social network is also, I guess, a part of metaverse only, where we start getting attached to a virtual entity more than what is happening in real life, right? We are very much, basically concerned about how many likes we get on a social media post, what people perceive of their personality on social media. Whatever we do, we first post it on social network, right? So that is also one of our, initial, you can say, idea of how eventually the attachment of people with virtual goods and virtual entity will evolve over the time, right? The only difference that will, be there from right now to, next 5 years would be that currently whatever the virtual assets that we are building, on games, on social network, we are not truly owning that, right? But with NFTs, that will change the game, right? With NFTs, whatever you start collecting in games, whatever you start collecting in, different social platforms that you use, you can truly own it and you can transfer it, you can share it, you can, sell it on a marketplace, right? So that will change.
Right. So in the year 2022, a lot of companies came up and a lot of startups came up. So what are your expectations from the year 2023, and does the future of Metaverse seem bright? So the future of Metaverse is definitely bright, but the next 4-5 years would be, shaping up the industry or shaping up the space, right? The last year was a hype year, right, where people were buying NFTs not for the sake of, the value which they perceive in it, but just to mint money, just to, basically 10x their money, right? So there were so many virtual, platforms that came up. There was Sandbox, where people were buying lands and, few millions dollars, right? Yes. But are people actually spending their time on that? No, right? People are still spending time on Instagram and Facebook and WhatsApp. So I feel that the value of these products will get, these products will get their true value when people start using these platforms. People start using this, spending their time on these platforms. We are still using, normal platforms like regular platforms like YouTube for watching videos. We are not watching videos or, attending a Metaverse concert right now, right? Because the experience is not that smooth, right? If you are, moving in a virtual 3D space, it's not easily accessible. You have to access your laptop for that, right? So as we see over the time, the experience becomes much better, much more experiential. It becomes handy to, masses, right? Then we will see the true, use case of these Metaverse platforms. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you so much. It was fun chatting. So this was Mr. Saurabh Gupta, co-founder of online gaming metaverse platform Tamasha Live. He shared insights on building an Indian metaverse and the future of metaverse. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Web3 वर्ल्ड वाइड वेब की एक नई यात्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे नए कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया में एक नई क्रांति ला रहा है। Web3 की दुनिया में टेक्नोलॉजी को अपनाने का चलन बढ़ रहा है और कई मामलों में ये राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित भी कर रहा है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए Web3 टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, ये पता लगाने का मुद्दा कई बिजनेस लीडर्स द्वारा उठाया जा रहा है। जब हम Web3 पर चर्चा करते हैं तो हम इसकी मूल संरचना को समझना चाहिए जो ब्लॉकचेन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक अपरिवर्तनीय डेटाबेस है जो आपके द्वारा एक्सचेंज किए जा रहे एसेट के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू होल्डिंग, स्टोरेज, ट्रेडिंग और पेमेंट्स को सक्षम बनाता है। Web3 और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को भारत में अपनाए जाने पर एक नजर डालते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज के दौर में सभी बड़े और विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तेजी से दुनिया भर में अपनाए जा रहे Web3 इकोसिस्टम को भारत में भी 450 से ज्यादा सक्रिय स्टार्टअप द्वारा अपनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इसमें अब तक देश भर में अप्रैल तक $1.3 बिलियन की फंडिंग भी जुटाई जा चुकी है। वैश्विक स्तर पर भी Web3 अभी भी आकार ले रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफिक डिविडेंड और उभरती टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के चलन ने भारत को विश्व स्तर पर Web3 के मामले में उच्चतम विकास बाजारों में से एक बना दिया है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय Web3 स्टार्टअप 4 यूनिकॉर्न के साथ 450 से ज्यादा कम्युनिटी के रूप में आकार ले चुके हैं। रिसर्च के अनुसार 2021-2022 के बीच भारत ने 170 से ज्यादा नए Web3 स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं, जो 2015 की तुलना में 50% से भी ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में इनमें से 80% से अधिक Web3 स्टार्टअप टियर 1 शहरों में है, वही टियर 2 और टियर 3 इकोसिस्टम जयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और कोयम्बटूर जैसे लोकेशंस में तेजी से बढ़ रहे हैं।
इस तरह से Web3 स्टार्टअप के लिए उभरते हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, जैसे कि इस रिसर्च में पाया गया है। Web3 इकोसिस्टम को भारत में बढ़ावा देने के लिए हाइक, CoinDCX, CoinSwitch कुबेर, Polygon, Coinbase, ZPay, WazirX, ANQ फाइनेंस, Biconomy, लिमिनल और टैक्स नोड्स के फाउंडर्स ने एक साथ आते हुए भारत Web3 एसोसिएशन को लॉन्च किया है। BWA को Web3 टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने और रिसर्च के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया गया है, जो Web3 उद्योग के लिए सिद्धांत स्थापित करने और भारत के टैलेंट पूल को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है। साथ ही BWA प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करके कंज्यूमर इंटरेस्ट को और बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये तो रही Web3 से जुड़ी बातें। अब आपको ब्लॉकचेन से जुड़े साल 2022 के राउंडअप से संदीप कराएंगे रूबरू। ओवर टू यू संदीप। शुक्रिया रुचि। तो आज हम आप सभी को भारत में पूरे साल हुई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी हलचल के बारे में बताएंगे। तो भारत में सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र ने भी बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन को अपनाया है। TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम निजी क्षेत्रों के लिस्ट में शामिल है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI, इंडियन टी बोर्ड, कॉटन इंडस्ट्री, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्रों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया। कई भारतीय कंपनियां ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ दुनिया को आशाजनक परिणाम भी दे रही है। ऐसे में नई तकनीक को अधिक सुचारू रूप से अपनाने के लिए अलग अलग संगठन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनियों तक पहुंच बना रहे हैं। उन्हीं ब्लॉकचेन सुविधा को प्रदान करने वाली कंपनियों के नाम में हाइपरलिंक इन्फोसिस्टम, एंटिटी डेटा, एक्यूबिट्स टेक्नोलॉजीज INC, TCS, इन्फोसिस और एसेंचर जैसे नाम भी शामिल है। तो ग्लोबल ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस मार्केट सालाना 45% की दर से बढ़ रहा है और 2026 तक $34 बिलियन तक पहुंचने की संभावना भी है, जिससे इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्पेशलिस्ट की मांग बढ़ रही है, जो भारत में भी देखने मिल रहा है। तो दोस्तों, भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए टेक्नोलॉजी के भविष्य के रूप में देखे जाने वाले Web3 और ब्लॉकचेन की ये बस शुरुआत है, जिसे आने वाले दिनों में एक नए आयाम पर देखे जाने की संभावना है। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Manoj Dara. And I am Vishakha Thakur. So, Metaverse was the buzzword of 2021. So, if we talk about various companies like Meta rebranded themselves to onboard the Metaverse trend, as according to various studies, Metaverse is going to be a $8 to $13 trillion market opportunity. Yes, Manoj. The Metaverse is quickly growing as a way for communities to connect with each other. The expansion of the Metaverse is leading companies such as Meta, Nike and others to invest in the development of the virtual world. Also, coins connected to Metaverse NFTs including Sandbox, Decentraland have seen their value skyrocket over the last several months. So, well, Metaverse is not headed for cities and countries, with some already planting their flags in the virtual world. So in this episode, we are going to talk about government and countries that are leading the charge to make their mark on the Metaverse. But first, let's try to understand the current scenario of the Metaverse market and what it is going to be in 5 years down the line. So let's listen in to what Mr. Kunal Nandwani, who is a YPO member of the Tech Entrepreneur, has to say about this opportunity. So current size, I think, is very small, probably running into a few billions at most. If you think about the global GDP, the global economy every year, it's close to $80 trillion, depending on the year you look at. In 5 years' time, this 80 trillion may reach to, let's say, $100 trillion or 120. I think at least 5% could become Metaverse.
5% of 100 trillion would be 5 trillion. So it's an easily a 5 trillion market in 5 years' time. Well, fantastic thought. So countries are competing against each other to be the first to enter the uncharted territory of deep space, moon, and now even the red planet, Mars. So, Vishaka, similarly, the digital space of the metaverse is also uncharted territory. Apart from the private companies and players betting big on the metaverse, now government of some countries and cities are buying into the hype of metaverse. But first, sovereign nation to enter the metaverse is the Caribbean nation of Barbados. Yes, Manoj, Barbados became the first nation to establish a virtual embassy in the metaverse where users can transport their avatars from one virtual world to another. And this was bound to happen because Barbados considers itself as one of the friendliest cryptocurrency country, which is actually it is. So if we are talking about the cryptocurrency friendly country in the world, if we don't mention Dubai and UAE, it's not possible, right? Absolutely. The Crown Prince of Dubai has his eyes set on the digital world. Sheikh Hamdan bin Mohammed, the Crown Prince of Dubai, announced a new metaverse strategy that aims to create 40,000 jobs and add $4 billion to the Emirates economy in the next 5 years as it continues to boost efforts to tap into the emerging digital space. This is huge actually. $4 billion is a big opportunity, right? Absolutely. So if we move forward, and Sheikh Hamdan has also said that the Dubai metaverse strategy would be essential to the Emirates' goals of becoming one of the leading economies for the metaverse and a major center for the global community. So, well, the initiative aims to cover all aspects of the metaverse's developments, from formulating regulations, developing applications, to nurturing talent and determining ways how these solutions can be used by government entities. So this is actually a fantastic development. But Vishaka, do you remember that in May 2022, Dubai's Virtual Asset Regulatory Authority, which is VARA, said it had entered into the metaverse with the establishment of its metaverse headquarters, making it the first regulatory in the world to have a presence in the emerging digital space. Yes, Manoj, I do remember. Dubai aims to become the metaverse capital of the world. So let's take Mr. Kunal's views on the same. So Dubai is becoming the center of Web3 with the country having its own metaverse strategy. Where do you see Dubai in the next 5 years? So Dubai would continue to attract due to their low taxation, a supportive regulatory framework, and they're already existing capital, access to capital, and lots of HNIs who've made a lot of money in the by investing into the Web3, cryptos, blockchain world. I think they would be a hot destination for sure, especially because their regulatory framework is very open, very collaborative, not too restrictive as of now. And so Dubai would play a role. In 5 years, it would be one of the top 3 or 5 favored destinations by all the metaverse development companies in some sense. They will have a big play, and given how they had been so forward looking and future thinking, I think they would certainly get some of the early big platforms coming out of Dubai. But yeah, so far 5 years time, if you take a 5-year horizon, Dubai would certainly have a good play, and they would have some good companies coming out of there. It was indeed a wonderful thought. So now let's move over from Dubai, UAE to Shanghai, China. The Shanghai government has proposed a group of guidelines to help it shift into the metaverse power. The plan of action defines each one of the technologies that the municipality needs to focus on to achieve the goals of building a $52 billion metaverse economy, while at the same time helping to establish 10 innovative companies in the area. That is interesting actually. Manoj, we can clearly see that metaverse has become a new buzzword in China, bringing about a host of new and exciting business opportunities. Of course, yes, not just China, Vishaka, but if you talk about South Korea is betting big on the metaverse as well. South Korea has emerged as a global technology powerhouse in the recent decade, giving a rise to industry giants such as Samsung, LG and Hyundai, which we all are aware of, and which is actually a fact of the global markets as well. Absolutely. So interestingly, the Korean government made headlines earlier this year when it announced to plan to pour nearly $200 million into its domestic metaverse ecosystem. That is actually a big number. But not only this, Vishaka, according to the Ministry of Science and ICT, the funding will help educate and train 40,000 and boost over 200 companies operating in the metaverse space. And by 2026,
the largest metaverse market by now. That's what market Wow. participants are saying. Yeah, and that's amazing. So, in conclusion, so far Barbados, UAE, China and South Korea have plunged into the metaverse. It's just matter of time before governments of other countries too take a leap into the virtual land of metaverse. Indeed. Yes. And if we talk about India, then there are few companies or maybe there are few entities that has actually announced plans about the metaverse. So there are private companies in India that are exploring the metaverse opportunity. If you talk about the government initiative, is actually lacking. True. So, well, that's it in today's episode. We will meet again with exciting stories about the metaverse. Till then, keep watching 3.2 TV, like and share our videos, subscribe our channel and press the bell icon to get instant updates. This time, this is Manoj Dara signing off. And this is me, Vishakha Thakur, signing off. Have a great day. Thank you. Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. Since the beginning of the year, momentum of top currencies has been increasing. The prices of Bitcoin and Ethereum have experienced a 24-hour rally, allowing them to reach a 3-week high. The global crypto market cap has increased by 1.30% over the last day, bringing the total to $850 billion. The 24-hour total volume has skyrocketed by 88.95% to $45.35, with DeFi accounting for 8.22% of that figure. The total volume of stablecoins is now 91.98% of the 24-hour market at $41.71 billion. But coins' dominance has decreased slightly 0.34%, bringing it to 38.98%. Elsewhere, shares of Bitcoin miner Marathon Digital Holdings surged by more than 3% at $4.23, despite ratings downgrade by investment bank Jefferies. Metaverse token Gala surprised the crypto audience by posting a 70% jump in its price. The optimistic outlook for the token remains intact. Solana's bonk crashed 50% in 24 hours. Bitcoin traded flat at $17,200, whereas Ether changed hands around $1,325 in the last 24 hours. Hello, welcome to 3.2 TV. I am Vishakha. You are watching a special episode of Metaverse Magic, wherein we bring you important updates from the metaverse space at large. Despite the market's overall bearishness in 2022, many users of the technology see the metaverse as the way of the future. All expect the virtual world to be more seamlessly interwoven with the real world in 2023, despite the fact that 2022 was full of shocks for the metaverse industry, where many new startups emerged. So let's study the themes that will rule this quickly expanding tech sector 2023 and how they will influence our digital future as we advance into it. But first, let's hear from Mr. Muru Patel, the founder of MyTokenized Capital, about the metaverse, which is becoming increasingly popular as businesses look to attract a larger audience in the virtual world.
there are various platforms being built, right? The interoperability of the web, these are the key problems that will be solved next 12 months. Once that is solved, 24 onwards, in my view, we then see a lot of action. And now let's take a look at the important events that made headlines this week. Well, people and investors are optimistic about the metaverse, like as his company is all set to invest in the metaverse in this year too. Now Meta wants to get ahead of the hackers by asking security researchers to identify vulnerabilities and issues in metaverse-related products such as MetaQuest, MetaQuest Pro and the MetaQuest Touch Pro. By encouraging cybersecurity experts from outside Meta to hack the metaverse, the company is looking to improve the security of products for everyone. Researchers who uncover account takeover vulnerabilities could be rewarded with up to $130,000. Along with Meta constantly focusing to improve and enhance its metaverse platform, there are various developments going on in the metaverse sector, and one such development is from DriverX, as they have launched haptic VR gloves. DriverX's haptic VR gloves are the first VR gloves that use micro coils to deliver a more authentic tactile experience. The coils surround your fingers, and when a current is applied, they contract a connected film to provide a more realistic sensory experience. The controller part uses hand gestures to mimic the buttons. The contact glove starts at around $1,850, which is considerably less than some of the current alternatives. The developers or the tech giants are not ready to leave any stone unturned in providing the users the best experience ever, and Samsung is one amongst them. Samsung recently surprised everyone when it debuted the Freestyle, a compact portable projector that looks like a spotlight. The 2023 Freestyle is also geared towards new use cases, including real-world metaverse applications. According to the company, with a maximum resolution of 1080 pixels, the $800 device won't work as a 4K TV replacement, but it could become a fun way to set up big screen gaming sessions now. Along with tech giants, car companies such as Maruti Suzuki have begun to take advantage of virtual reality. Maruti Suzuki has announced that it will start delivering immersive experiences in metaverse-based showrooms for its lineup of cars. The company, which has produced millions of cars for the Indian market, announced that it is launching its ArenaVerse network, which allows customers to interact with any of the cars offered by the company. Customers will not be alone in this experience, as the company will also delegate sales representatives to advise customers on the possible options and the way in which the system operates. Well, not only companies, countries too are betting big on metaverse, as Dialog has recently launched Sri Lanka's first fully immersive metaverse, Futureverse. Powered by immersive technologies such as virtual reality and extended reality, the Futureverse from Sri Lanka's premier connectivity provider extends a seemingly borderless digital realm that delivers endless experiences and possibilities, where visitors can experience a unique virtual world filled with abstract landscapes and objects. Futureverse is a fun way to spend free time while interacting with friends virtually through voice or chat. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such updates on Metaverse from all over the world. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Do like this video, share, subscribe 3.0 TV, and yes, do not forget to press the bell icon to get instant updates.
After a slow beginning, the central bank digital currency has picked up speed. The number of retail users of CBDCR is expected to touch 50,000 at the end of this month. Currently, this number stands at around 16,000. The Reserve Bank of India launched a pilot project for e-rupee on December 1st last year. Official sources said the digital currency is progressing rather well. Since the launch of the pilot, around 16,000 users conducted transactions worth approximately 64 lakh, sources said. And with further ease of use, awareness and more points for acceptability, the expectation is that the pace will quicken. The pilot on digital rupee wholesale was launched on November 1st. At present, average daily transaction for e-rupee W is 200 crore. 8 banks are participating in the retail pilot project. These include State Bank of India, ICICI Bank, the Yes Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank. Use of e-rupee is voluntary and it is part of total currency in circulation. According to a legal filing posted on January 8th, approximately 117 parties have expressed interest in purchasing FTX units as the deadline for initial bids approaches. While the crypto company's bankruptcy case could take years, the estate has prioritized the sale of LejoX, FTX Japan, FTX Europe and stock clearing platform Embed, claiming they are the easiest to separate and risk losing value if not sold quickly. As of 8th of January, approximately 117 parties, including various financial and strategic counterparties globally, have expressed interest to the debtors in a potential purchase of one or more of the businesses, according to a legal declaration signed by Kevin Kofsky, a partner at Perella Weinberg, the investment bank hired by FTX Group to represent the bankruptcy cryptocurrency company. So far, FTX has signed 59 confidentiality agreements, according to Kofsky. LejoX, a derivatives arm of FTX US and one of the empire's few remaining companies, leads the pack with 56 expressions of interest. France's Financial Markets Authority wants to force crypto companies to obtain a license if they are not already registered in the country, according to its chair, Marie-Anne Babet-Laini, on January 9. Babet-Laini appeared to be supporting a move proposed last year by the French Senate that would require crypto firms to seek some regulatory recognition in advance of the European Union's new MiCA regulation, which is set to take effect on October 1, 2023. The AMF, like the Parliament, calls for an exploited transition to a regime of mandatory licensing for non-registered providers of crypto services, Babet-Laini said at an event, according to a tweet from the regulator. A number of well-known companies, including Binance, have registered with the AMF. The registration involves checks on companies' governance and compliance with anti-money laundering rules. No provider has yet been issued a license, a voluntary procedure set out under French law. In the upcoming segment, we will update you about following news. Calvin Harris enters the metaverse for first ever VR concert. Gala reveals partnerships with Dwayne Johnson and Mark Wahlberg. Token skyrockets. Apple's mixed reality headset to launch this spring. Stay tuned for more updates. थ्री डॉट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा। भारत फल और सब्जी उत्पाद में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन जब बात वैश्विक फल और सब्जी बाजार की है तो इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है।
इसका समाधान निकालने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर हो रही ऑर्गेनिक फार्मिंग को ब्लॉकचेन की मदद से एक लेवल पर ऊपर ले जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। सरकार ने देश के फूड शिपमेंट को बढ़ाने और किसानों को केमिकल मुक्त तरीकों के अपनाने के लिए सभी निर्यात संचालित फैसलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की योजना बनाई है। नीति आयोग ने सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। नीति आयोग का मानना है कि ब्लॉकचेन की मदद से प्रोडक्शन से जुड़ी जानकारियों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। सेब की खेती पर पायलट प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद ब्लॉकचेन से सब्जियों के अलावा आम, केला, अंगूर, अनार को भी ट्रैक किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर का इस्तेमाल फसल के डेटा और स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए की जा सकती है। ब्लॉकचेन की मदद से उपभोक्ता भी खरीदते समय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चेन को बैक ट्रेस भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार भारत में 2021-22 में लगभग $1.52 बिलियन मूल के ताजे फल और सब्जियों का निर्यात किया था, जिसमें फलों के निर्यात $750.7 मिलियन और सब्जियों का $767 मिलियन था। प्रोसेस फलों और सब्जियों का निर्यात कुल $1.73 बिलियन था। इसी लिस्ट में दाल के साथ लगभग $1.12 बिलियन की प्रोसेस सब्जियां और $610.7 मिलियन के प्रोसेस फल और जूस भी शामिल थे। भारत के ताजे फल और सब्जियों के मेजर डेस्टिनेशंस हैं बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, नेदरलैंड्स, मलेशिया, श्रीलंका, यूके, ओमान और कतार। परंपरागत तरीकों से की जाने वाली खेती को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। कृषि प्रणाली सभ्यता जितनी ही पुरानी है, हजारों वर्षों से की जाने वाली खेती के तरीकों को अब पिछले 10 वर्षों से दुनिया को नए आकार देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तैयार है। देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि प्रणाली में एक और क्या-क्या क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव करती है। देखते रहिए 3.0 टीवी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू। Calvin Harris's first VR concert, scheduled for Friday, January 13th, will be free to view in 2D via his official TikTok account, while fans in Europe and Asia will be able to experience the concert in 3D via Pico virtual reality headsets. Harris will be appearing as a virtual avatar in a digitally animated performance that aims to take fans on a musical journey through Calvin's virtual universe. The concert is described as a metaverse party filled with audio-reactive visuals in a nature-inspired luminous world in the event description. VR headset users will be able to explore Calvin's world as avatars, party together, and be a mere few feet away from Calvin while he performs. Gala has increased by more than 143% in the last 24 hours and by more than 60% in 2022. The Scarps After Gala announced a collaboration with Dwayne Johnson and Mark Wahlberg. It aided its Gala tokens 121% increase in 4 days. Gala Games announced on January 6 that it had acquired a mobile game studio with over 20 million users. The studio's total revenue exceeded $100 million and several games are currently available in the App Store. After several years of development, Apple's first major step into the metaverse, a high-end mixed reality headset, will reportedly be unveiled to the world for the first time this spring. According to a report from Bloomberg, the tech giant is likely to show off its hybrid headset in the coming months ahead of its annual Worldwide Developers Conference, which typically takes place in June. Some third-party developers are reportedly already building apps for the device, which may be called the Reality Pro.
After the spring announcement, the combined augmented reality and virtual reality headset will reportedly be released later this year alongside new iPhones and other refreshed Apple devices. The headset's operating system will reportedly be called XROS, although it's said to be called Borealis internally. In the upcoming segment, we will update you about following news. CFTC charges Mango Markets hacker with fraud. BlockFi management has not withdrawn any crypto since October. Lawyer tells court Trump NFT mania gets a very short term as sales nearly vanish. Stay tuned for more updates. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक में हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 TV के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. As Metaverse goes on to become the new universe around us, there is good news regarding the same coming from India as well. While Dubai is set to crown itself as the Metaverse capital of the world, India's very own Chennai is all set to become the Metaverse hub for India. If over the years Bangalore has quite rightly risen to the title of App Capital of India, can Chennai be far behind? Well, Chennai has already made a mark by building business software for companies globally, and now the startups are dashing to develop products and services in the metaverse. A number of companies in Chennai are helping clients in every way possible. They are training employees experientially in vocational skills and standard operating procedures, creating digital twins of products, and are also launching products in the virtual world. So let's have a look at some such Chennai-based companies which are investing in Metaverse, attracting talent and training employees in order to give users an immersive experience. First on the list is XR Labs. XR Labs is a products and solutions company in the AR or VR space. It is founded by engineers Srivatsan and Thirukumaran in 2016. XR Labs caters to Bajaj, Hyundai, Nissan, Tata Electronics and other automakers. With immersive training solutions being its biggest strength, the company has been bootstrapped and profitable since the beginning and is now in talks to close its first funding round. Srivatsan, founder of XR Labs, says the company wants to go beyond the wow factor of Metaverse and create real business impact for their clients. Next on the list is Novak Technology. Novak Technology Solutions has added more than 10 clients in the last 2 years. According to Shanavas, the head of the immersive technology at Novak, an e-mobility client recently worked with the company to create a metaverse version of their prototype to showcase at exhibitions.
Visitors will be able to experience the product through VR headset. The company is also working with a large financial services player to create a virtual branch for them. Skillveri is another startup that is creating headlines. Skillveri, a startup incubated at IIT Madras Rural Technology Business Incubator, started developing VR hardware and software as early as in 2012 to plug the vocational skills gaps in India. The startup runs simulator training programs for welding, painting, and AC technicians. This helps companies reduce time and cost involved in training staff and also gets workers more industry ready. And there is one more newbie called Engage. Engage Technologies was launched in 2014 with an AR assignment with the Rajnikant starrer Kochadaya. The company subsequently worked on AR or VR development services for enterprises, state law enforcement agencies, and even the armed forces. Engage founder and CEO Vijay Karunakaran is also working closely with the government to determine the state's metaverse strategy. Engage is also training students across 50 government polytechnic colleges and 450 plus engineering colleges. Well, that's all for now. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Keep watching 3.0 TV for more such updates. Do like, share and subscribe our channel. And yes, do not forget to hit the bell icon for instant updates. The Commodity Futures Trading Commission filed charges against Avram Eisenberg on Monday, accusing him of manipulating the Mango Markets decentralized exchange and stealing over $110 million in digital assets. The news comes a week after the Department of Justice charged Eisenberg with the October 11, 2022 hack. The goal of defendant's scheme was straightforward: to artificially inflate the value of his swap contract holdings on Mango Markets through price manipulation so that he could borrow a significant amount of digital assets that he had no intention to repay, the CTFC wrote in its filing. Mango Markets is a Solana-based decentralized exchange governed by a DAO made up of holders of its native token, Mango, that lets investors lend, borrow, swap, and use leverage to trade crypto. Executives of bankrupt crypto lender BlockFi have not withdrawn any of their own cryptocurrencies locked up in the platform since October, a lawyer for the company told a U.S. bankruptcy court for the District of New Jersey on Monday, contrasting it to fellow bankrupt crypto lender Celsius Network. BlockFi filed for bankruptcy in November, shortly after the collapse of crypto exchange FTX. Joshua Sussberg, a partner at law firm Kirkland & Ellis and representative for BlockFi, said BlockFi plans to file its assets and liabilities along with a statement of financial affairs on Wednesday, which BlockFi later confirmed on Twitter. Shortly after the first hearing in November, the company kicked off a sale process and has reached out to 106 domestic and international potential buyers for some or all of the business, Sussberg's presentation said. The company plans to ask for court approval of bidding procedures at a Jan 30 hearing. It's been less than a month since Donald Trump's official NFT trading cards launched, to a mostly perplexed response even from his supporters, and the ensuing hype was sizable but short-lived. Now, the NFT trading card project has slumped to new lows as trading demand continues to vanish. Secondary market trading volume for the Trump digital trading cards project hit a new daily low of just over $21,000 on Sunday per data from CryptoSlam. The largest single-day tally for the project so far in 2023 is just shy of
$33,000 on January 5. Sunday's tally marks a more than 99% decrease in daily volume from the peak day on December 17, when more than $3.5 million worth of the NFTs were traded soon after original primary sale. There were more than 2,000 unique buyers on that date last month and over 3,300 unique buyers on December 16 as prices started climbing. But on Sunday, when sales volume hit a new daily low, CryptoSlam reported just 28 unique buyers across 98 total transactions. That's all in this bulletin. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our channel. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक पे हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। माई पॉइंट इज दैट अगर मैं एक सिंगल ग्रीन स्क्रीन के साथ इतनी इमेजिनरी उड़ान भर सकती हूँ, तो जरा सोचिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ विजनरी फिल्म मेकर क्या नहीं कर सकते। और जहां विजनरी फिल्म मेकर्स की बात आती है, वहां एंटरटेनमेंट की दुनिया के दिग्गज राइटर, डायरेक्टर और इन्वेंटर जेम्स कैमरन का नाम सबसे ऊपर टॉप पर आता है। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर 2, एलियंस, टोटल रिकॉल और टाइटैनिक जैसी ब्रेथ टेकिंग मूवीज बनाने के बाद वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं ऐसी पेशकश जिसने सबका दिल नीला नीला कर दिया है। अब इस नीले नीले क्लू से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार 1 ने ब्रेथ टेकिंग न्यू 3D टेक्नोलॉजी के जरिए मानो हर तरफ सनसनी मचा दी थी। कैमरन ने इस फिल्म को 10 साल पहले ही अपने मन में आकार दे दिया था, लेकिन उसे दर्शकों के बीच लाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को बनाने में उन्हें लंबा समय लग गया। रिलीज के बाद सिनेमा की दुनिया को एक नया आयाम देने वाली फिल्म ने सभी का फिल्म देखने का नजरिया ही बदल दिया। फिल्म मेकिंग के तरीकों में क्रांति लाने के लिए कैमरन ने रियल फुटेज और मोशन कैप्चर्ड CGI को मिक्स कर 3D और CGI को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए खुद टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। $237 मिलियन के भारी भरकम बजट से बनी अवतार ने वर्ल्ड वाइड $2.92 बिलियन की कमाई की थी। अवतार 1 आज तक की वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ब्लॉकबस्टर है। The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much. I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. It is just remarkable to be able to see the movements and the performance go straight into the character. And it's like, there's Kate and then, hey, there's Renard. So that has been fascinating to me. What is this? Don't know what it... अवतार ही नहीं बल्कि इसके पहले भी अपनी सभी फिल्मों में जेम्स कैमरन ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अवतार को नोवेल टेक्नोलॉजी इमेज बेस्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर ने अलग बनाया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दौरान एक्टर्स को कैमरे से लैस स्पेशल हेडगियर को सिर पर पहनना था। CGI के अलावा बड़े पर्दे पर अवतार को दर्शकों के सामने लाने के लिए डिजिटल एनिमेशन, स्टेरियोस्कोपिक 3D फ्यूजन कैमरा सिस्टम, वर्चुअल कैमरा और साइमल कैम जैसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया था। कैमरन एक कहानीकार के रूप में समझाते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को टूल किट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर किस तरह से रियलिस्टिक टच दिया जा सकता है। कैमरन ने अपनी फिल्म मेकिंग से ये साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से अहम भूमिका निभा रही है
अब बात करते हैं रिसेंटली रिलीज अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में। तो इस फिल्म में भी जेम्स कैमरन ने इसे अवतार 1 से भी विजुअली बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अवतार 2 में फिल्म मेकर ने सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस फिल्म को उन्होंने कैसे शूट किया। तकरीबन $400 मिलियन के बजट में बनी अवतार 2 ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। ऐसे में देखते हैं कैमरन की टेक्नोलॉजी से बनी फिल्म में मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से फिल्म को इन्फ्लुएंस किया है। सबसे पहला नाम वर्चुअल रियलिटी का आता है, जिसकी मदद से रियल अंडर वाटर एक्सपीरियंस को दर्शकों ने ऑन स्क्रीन अनुभव किया है। फिल्म की कास्ट और क्रू ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से रियल टाइम में इमेजिनरी पेंडोरा को एक्सप्लोर किया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑगमेंटेड रियलिटी का आता है। पेंडोरा की दुनिया AR की वजह से ही रियलिस्टिक लगती है। जटिल शरीर वाले एलियंस की फिल्म में AR के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी है, जिसे परफॉर्मेंस कैप्चर के रूप में भी जाना जाता है। ये लोगों या वस्तुओं की मोशंस की रिकॉर्डिंग और उन मोशंस को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एनिमेटेड वस्तुओं में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही खत्म होती है हमारी आज की स्पेशल स्टोरी, लेकिन अवतार मूवी सीरीज का सिलसिला जारी रहेगा। जेम्स कैमरन ने अवतार 3 पर काम शुरू कर दिया है। भाई मैं तो अवतार 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप भी होंगे। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। ऐसी एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। कामयाबी की ऐसी रफ्तार आपने देखी नहीं होगी। सफलता की ऐसी ऊंचाइयां आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन महज 4 महीनों में रेडिट ने जो सक्सेस हासिल किया है उसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। जुलाई में लॉन्च हुआ रेडिट आए दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में कई NFT प्लेटफॉर्म्स इसे खतरे के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग रेडिट पर सवाल उठा रहे हैं। क्रिप्टो के गलियारों में तो ये भी सुगबुगाहट है कि रेडिट ने लोगों को धोखे से अपने प्लेटफॉर्म पर NFT खरीदने के लिए उकसाया है। जी हाँ, इल्जाम संगीन है, लेकिन ये इल्जाम क्यों लगाया गया बताएंगे आपको। पहले कहानी रेडिट की कामयाबी की। आप जानकर हैरान होंगे कि चंद महीनों में रेडिट ने न सिर्फ 1.5 बिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स जुटाए, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर 2.9 मिलियन कलेक्टिबल अवतार्स मिंट भी किए गए। खैर, खबर ये है कि पॉलीगॉन और डून एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक 24 अक्टूबर को रेडिट ने 24 घंटों में NFT टोकन अवतार में $1.5 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की, जो कि लॉन्च से लेकर अब तक रेडिट पर हुई इस कलेक्शन की क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम $4.1 मिलियन का 1/3 इंक्रीज है। इसके साथ ही रेडिट की डेली सेल्स वॉल्यूम भी अपने ऑल टाइम हाई पर थी, जहां 3780 डिजिटल कलेक्टिबल्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए। रेडिट पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अवतार क्रिएट करते हैं, जिन्हें NFT के तौर पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाता है। इन कलेक्टिबल्स को रेडिट के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट वॉल्ट पर यूजर्स परचेज कर सकते हैं। इन कलेक्टिबल्स को पहना जा सकता है या फिर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर डिस्प्ले किया जा सकता है जब यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। NFTs खरीदने के बाद इन्हें सेकेंडरी मार्केट जैसे कि ओपनसी पर बेचा या खरीदा भी जा सकता है, जहां कुछ कलेक्शंस को छोटे बिड्स और कुछ कलेक्शंस को कोई बिड्स नहीं मिलते, तो कईयों का फ्लोर प्राइस ही $2000 से ज्यादा होता है। अब तक का रेडिट NFT का हाईएस्ट प्राइस रहा है $24,149 या 18 ETH। जुलाई में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर कलेक्टेबल NFT अवतार लॉन्च करने से अब तक यूजर्स ने रेडिट पर 2.5 मिलियन NFT वॉलेट्स ओपन किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केटप्लेस OpenSea पर 2.5 मिलियन वॉलेट्स है। अगर आप इन NFTs को ओन करते हैं तो आप इन्हें रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि OpenSea जैसी सेकेंडरी मार्केट पर सेल भी कर सकते हैं। रेडिट रिकॉर्ड्स एक्सप्लोड कर रहे हैं फिलहाल। डून एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टेबल रेडिट NFT अवतार की सेल्स 24 अक्टूबर को 24 घंटों में थी $2.5 मिलियन और सेकेंडरी सेल्स ने तो पिछले कुछ दिनों में $5 मिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है।
हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों पहले रेडिट पर NFT हेटर्स भरे हुए थे और अब उन्हीं में से कई NFT के जरिए प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जहां रेडिट पर आरोप लगाया गया कि उसने धोखे से लोगों को NFT में इन्वेस्ट करवाया। तो आखिर कैसे रेडिट की बदौलत 3 मिलियन यूजर्स ने NFT सेक्टर में एंट्री की, आइए बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, कलेक्टिबल अवतार्स। रेडिट ने कहीं भी Web3, NFT या फिर उससे जुड़ी टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नॉन Web3 बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलेक्टिबल अवतार्स नाम से सीधा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ऐसे में जाहिर है बहुत से लोग इस बात से अनजान थे कि वो NFTs खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंपल पासवर्ड सिक्योरिटी। रेडिट पर वॉल्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपने पब्लिक एड्रेस को एक्सेस करने के लिए किसी सीड फेज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। Web3 यूजर्स के लिए इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रेडिट ने सिंपल पासवर्ड मेथड क्रिएट किया है। पॉइंट नंबर 3, ईज ऑफ पेमेंट। रेडिट NFTs क्रेडिट कार्ड के जरिए भी खरीदी जा सकती हैं। इसके लिए फिएट को ETH या मैटिक में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही ये साबित किया जा सकता है, लेकिन इन 3 फैक्टर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है जिसके चलते तमाम नॉन Web3 बायर्स ने NFT में दिलचस्पी दिखाई। खैर, सच्चाई क्या है और क्या वक्त के साथ रेडिट कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. Have a great day. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. लंबोर्गिनी, फोक्सवैगन, फरारी, ह्यूंडई, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। दुनिया भर की तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अब NFTs और मेटावर्स में खासी दिलचस्पी ले रही हैं, जो एक एक करके NFT को कैश करना चाहती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि गिरती हुई क्रिप्टो मार्केट के हालातों में भी NFT की दुनिया जगमगा रही है, जहां आए दिन कोई ना कोई बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड NFT मार्केट को रोशन कर रहा है। तो कौन सी है ये NFTs? चलिए जानते हैं। लग्जरी कार्स की इस फहरिस्त में हाल ही में जुड़ने वाला नाम है फोर्ड। इस ऑटो जायंट ने अपने सभी की ब्रांड से जुड़े 19 ट्रेडमार्क सबमिट किए हैं। फोर्ड जल्द ही वर्चुअल कार्स, ट्रक्स, वैन्स और क्लोथिंग ऑफर करेगी। साथ ही इसके प्लान्स NFTs के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर्स लॉन्च करने के भी हैं। फोर्ड ही नहीं, साउथ कोरिया के कार जॉइंट ह्यूंडई ने भी NFTs और मेटावर्स से जुड़ी कई ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन फाइल की हैं। इन ट्रेडमार्क्स में स्पोर्ट्स गियर, हेड गियर, फुटवेयर, आईवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और कई आइटम्स शामिल हैं। इसके साथ ही मर्सिडीज बेंज, ह्यूंडई, लंबोर्गिनी, बेंटले जैसे मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी NFT कलेक्शन इशू की है। हाल ही में रेनो कोरिया ने सैंडबॉक्स मेटावर्स पर वर्चुअल ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस किया है। लग्जरी सुपर कार मैन्युफैक्चरर W मोटर्स ने भी हाल फिलहाल में मेटावर्स में शानदार एंट्री की है। तो वहीं अल्फा रोमियो ने मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए NFTs तैयार की हैं। फोक्सवैगन ने भी एक इंटरैक्टिव कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके तहत लॉन्च हुए फ्यूचरिस्टिक कमर्शियल में हिडन NFTs थी। 100 यूनिक NFTs की इस कलेक्शन में हिडन क्लूज की मदद से सही जवाब देने वालों के लिए कई एक्साइटिंग प्राइजेस भी थे, जिसमें PlayStation 5 से लेकर Volkswagen एडवांस ड्राइविंग कोर्सेज तक शामिल थे। हैरानी की बात तो यह है कि फिलहाल NFT मार्केट में कार्स का ऐसा क्रेज छाया हुआ है कि असल कार से भी ज्यादा एक्सपेंसिव NFT कार्स बिक रही हैं। यानी लग्जरी कार से जुड़ी ऐसी डिजिटल पिक्चर जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, सेव कर सकता है एंड ऑफ कोर्स उसे असल में ड्राइव करना या फिर उसमें बैठना मुमकिन नहीं है। ऐसी सुपर एक्सपेंसिव कार NFTs के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट
निसान GT-R। सितंबर 2022 में निसान GT-R स्पोर्ट्स कार की एक 3D रेंडरिंग $2.3 मिलियन में ऑक्शन हुई, जबकि असल कार की कीमत $200,000 थी। यानी कार की NFT एक्चुअल कार से 10 गुना महंगी थी। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग लैम्बोर्गिनी। ना जाने कार से लोगों का क्या फैसिनेशन है, जो एक कार के एक्सप्लोजन के वीडियो पर भी लाखों डॉलर्स निसार कर सकते हैं। श्लोम्स नाम के इस आर्टिस्ट ने $200,000 की हरिकेन लैम्बोर्गिनी को पहले एक्सप्लोड किया, फिर उसके वीडियो को बतौर NFT असल कार की कीमत से भी ज्यादा प्राइस यानी $250,000 में बेचा। भाई वाह, क्या बात है। नंबर 3 पे है ए डेलोरियन DMC-12। बैक टू द फ्यूचर फ्रेंचाइज के फैंस टाइम ट्रैवलिंग डिलोरियन को मिनिमम $50,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी NFT का प्राइस सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। इसकी NFT की कीमत है $180,000। यस। नंबर 4, द कार मैन लोगो। इस कार NFT के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल थाम कर सुनिए, $8.5 मिलियन पर प्राइस ये द मोस्ट एक्सपेंसिव कार रिलेटेड NFT है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये महज एक लोगो है और वो भी 2D में। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है कि जब ओरिजिनल एस्टन मार्टिन DB5 $6.9 मिलियन में खरीदने के बाद भी कई मिलियंस बच सकते हैं, तो कोई अपना दिवालिया निकालकर इस मोस्ट एक्सपेंसिव NFT को क्यों खरीदे। और अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सवाल का, आखिरकार NFT और मेटावर्स को लेकर इतना क्रेज क्यों है और क्या है इसका फायदा। दरअसल दुनिया भर के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ चढ़कर कार लॉन्चेस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा है घर बैठे बैठे ग्लोबली लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, साथ ही एक बिगर एंड यंगर ऑडियंस को रीच आउट करना। मेटावर्स में टेस्ट ड्राइव्स, स्पेसिफिकेशन असेसमेंट, अलग अलग कलर्स देखना और चूज करना, यहाँ तक कि कार्स की ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग भी पॉसिबल है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी तो ये क्लेम कर रही है कि उनके मेटावर्स नेक्सावर्स पर फर्स्ट कार बुकिंग भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ वोल्वो और निसान मेटावर्स में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर चुके हैं। तो मर्सिडीज बेंज भी अपनी G क्लास मेटावर्स में ही लॉन्च करेगी। चलिए, मेटावर्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे फायदे हो रहे हैं इस पर तो हमने बात कर ली। अब चलिए बात करते हैं कि करोड़ों कमाने के अलावा ऑटोमोबाइल सेगमेंट में NFTs का क्या फायदा है। तो फायदा नंबर 1, द फ्यूचर ऑफ व्हीकल ओनरशिप NFT डील्स। क्योंकि NFTs डिजिटल एसेट की ओनरशिप रिकॉर्ड करती हैं, उनके पेपर्स को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए ये एक्सट्रीमली सिक्योर भी है। पॉइंट नंबर 2, रिकॉर्डिंग व्हीकल डेटा विद NFTs। हर व्हीकल के 2 तरह के डेटा होते हैं, पर्सनलाइज जिसमें ड्राइवर से जुड़ी इंफॉर्मेशन, GPS इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग स्टाइल एंड क्लाउड डेटा मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा नॉन पर्सनल डेटा रिकॉर्डेड बाय सेंसर्स, जिसमें रोड कंडीशन के साथ साथ मेंटेनेंस और रिपेयर इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन NFTs के तौर पर स्टोर की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांड प्रमोशन। बदलते वक्त के साथ NFTs का इस्तेमाल ब्रांड प्रमोशन और कैंपेन्स के लिए भी बढ़ चढ़कर किया जा रहा है, क्योंकि ये उन नए कस्टमर्स के साथ एंगेज करने का अच्छा तरीका है जो डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। अक्सर एक्सपर्ट्स ये डिबेट करते हैं कि क्या NFT बबल बर्स्ट होगा या नहीं, लेकिन जिस तरह से NFTs स्पोर्ट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्लरिश कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि NFTs का सिंहासन फिलहाल कोई हिला नहीं सकता। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.0 TV के इस खास शो टीप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में फिर एक बार आपका स्वागत।
तो सीबीडीसी को डिजाइन करने वाले अहम प्रिंसिपल्स में से कुछ पर नजर डालने के बाद अब चलिए इसके दूसरे पार्ट में सीबीडीसी से जुड़े प्रॉस और कॉन्स पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही इसके पहले पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्या है फायदे। सीबीडीसी की अंडरस्टैंडिंग साफ तौर से बताती है कि वे फाइनेंस के फ्यूचर के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीडीसी के कोर एलिमेंट हमें सीबीडीसी की जरूरत क्यों है, इसके लिए सहजता से एप्रोप्रिएट रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीबीडीसी में फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बदलने का पोटेंशियल है, जिसके बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि उन स्पेसिफिक वैल्यू एडवांटेजेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो वे सभी के लिए लेकर आते हैं। सीबीडीसी द्वारा ऑफर किए जाने वाले सबसे प्रमुख लाभों में से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन से स्कोप को एक्सपांड करने में इंप्लाइड है। आज भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने में असमर्थ है। डेवलपिंग कंट्रीज के रिमोट एरियाज के एग्जांपल्स बताते हैं कि किस तरह से बैंक अकाउंट्स तक पहुंच कठोरता से प्रतिबंधित है। सच कहे तो कई बैंक अपनी सर्विसेज के साथ ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ऐसे मामलों में सीबीडीसी प्रॉस लो कॉस्ट और बेटर इफिशिएंसी के आश्वासन के साथ फाइनेंशियल सिस्टम तक आसान पहुंच इंश्योर कर सकते हैं। लो कॉस्ट पेमेंट सिस्टम बिना बैंक अकाउंट रखे स्मार्टफोन के जरिए इंडिविजुअल्स और कस्टमर्स के बीच बिजनेस में ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। दरअसल सीबीडीसी के बेनिफिट्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोग फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने के नए पर्सपेक्टिव्स का अनुभव कर सके। बिग टेक मोनोपोली के लिए किस तरह से है रेडिकल कंपटीशन, आइए देखते हैं। डिजिटल मनी को तेजी से अपनाने से लार्ज टेक कंपनीज में पावर के कंसंट्रेशन में प्रोफाउंड ग्रोथ हुई है। बड़ी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के जबरदस्त नेटवर्क इफेक्ट के कारण रिलायबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के रूप में काम करती है। हालांकि सीबीडीसी ने अपने देश के बैंकिंग सिस्टम की तुलना में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लोगों के विश्वास को इनेबल किया है। पेमेंट सिस्टम की बेटर फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल बैंक सीबीडीसी के ऐसे ट्रेड्स का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सीबीडीसी के फायदे सेंट्रल बैंक्स को लार्ज टेक फर्म्स के मोनोपोली से लड़ने में मदद कर सकते हैं। किस तरह से पेमेंट सिस्टम्स में होगी बेहतर इफिशिएंसी, आइए देखते हैं। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से जुड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज रिटेल और लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स की सेफ्टी और इफिशिएंसी में सुधार है। रिटेल पेमेंट्स के मामले में सीबीडीसी के बेनिफिट्स पेमेंट्स करने के लिए प्रोसेसेस की इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट पर जोर देते हैं। ऑनलाइन पीयर टू पीयर यानी P2P और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पेमेंट सिस्टम्स के लिए कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें सीबीडीसी के जरिए बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, होलसेल या लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स भी अटेंशन ग्रैब करते हैं। सीबीडीसीज लॉन्गर सेटलमेंट आवर्स के साथ साथ लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स में तेजी से सेटलमेंट को इनेबल कर सकता है। किस तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तेज और बेहतर हो सकते हैं, देखते हैं। सेंट्रल बैंक्स ऑफ कनाडा, सिंगापुर और यूके के कोलैबोरेशन से की गई स्टडी के अनुसार सीबीडीसी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और बैंक्स के बीच सेटलमेंट के मामले में काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में सुधार करने की पोटेंशियल है। होलसेल सीबीडीसी के एडवांटेजेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स के मामले में क्लियरली एविडेंट है। दिलचस्प बात यह है कि होलसेल सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए आइडियल आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह से हो सकती है सीबीडीसी में रिस्क, आइए देखते हैं। नंबर 1, प्राइवेसी कंसर्न्स। टैकल करने के लिए फर्स्ट इशू यूजर्स की प्राइवेसी के लिए बढ़ा हुआ रिस्क है। ये देखते हुए कि सेंट्रल बैंक संभावित रूप से यूजर ट्रांजैक्शन के संबंधित भारी राशि में डेटा को संभाल सकता है। इसके सीरियस इंप्लीकेशंस है क्योंकि डिजिटल करेंसीज यूजर्स को कैश में लेनदेन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लेवल को ऑफर नहीं करेगी। नंबर 2, डिसइंटरमीडिएटिंग बैंक्स। सीबीडीसी के मूव अगर सफिशिएंट साइज और ब्रेड के है तो बैंक्स के फंड्स को वापस लोन्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि सीबीडीसी के लिए डिपॉजिट्स फ्लाइट सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट्स को एक्सपांड कर सकती है, जिससे यह सवाल उठता है कि बैंकिंग चैनल से बचने वाले डिपॉजिट्स रियल इकोनॉमी में कैसे वापस आने चाहिए। नंबर 3, लो यूजर एडॉप्शन। ये तब अराइज हो सकता है जब कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए इसकी यूजफुलनेस को अच्छी तरह से नहीं परसीव किया जाता है।
लो सीबीडीसी एडॉप्शन से सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में बाधा आ सकती है। इन सब के अलावा दूसरे रिस्क की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी का तेजी से ऑब्सोलेंस सीबीडीसी इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जो अपग्रेडेशन के हायर कॉस्ट की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट्स के ऑपरेशनल रिस्क के रूप में स्टाफ को सीबीडीसी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए फिर से रीट्रेन और ग्रूम होना होगा। साथ ही सेंट्रल बैंक द्वारा सीबीडीसी को मैनेज करने में आने वाले ऑपरेशनल बर्डन और कॉस्ट इसके डिसएडवांटेजेस में से कुछ है। तो ये तो रही सीबीडीसी को डिजाइन करने वाले प्रिंसिपल से लेकर प्रॉस और कॉन्स तक की बातें। ऐसे में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक्स के बारे में और अधिक जानने के लिए पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं वेब3 से जुड़े नए एपिसोड्स लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.0 टीवी। DeFi की दुनिया में 3 पॉपुलर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींची है। इसमें यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग और लिक्विडिटी माइनिंग शामिल हैं। इन 3 DeFi ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए पार्टिसिपेंट्स को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन के सपोर्ट में अलग अलग तरीकों से अपने एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत होती है। हालांकि इन तीनों के अंडरलाइंग नेचर एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन तीनों अंडरलाइंग नेचर के बारे में नॉलेज हासिल करने से पहले क्रिप्टो स्पेस की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यील्ड फार्मिंग क्या है? यील्ड फार्मिंग यकीनन क्रिप्टो एसेट पर रिटर्न अर्न करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। एसेंशियली कोई भी अपने क्रिप्टो को लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करने के साथ पैसिव इनकम अर्न कर सकता है। आप इन लिक्विडिटी पूल्स को अपने बैंक अकाउंट के इक्विवेलेंट सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरह मान सकते हैं, जहां आप अपना पैसा जमा करते हैं, जिसका इस्तेमाल बैंक्स दूसरों को लोन देने के लिए करते हैं और इसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट के पोर्शन के रूप में कॉम्पेंसेट करते हैं। यील्ड फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने क्रिप्टो एसेट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिक्विडिटी पूल जैसे कि ETH और USDT में लॉक कर देते हैं।
फिर उसी प्रोटोकॉल में दूसरे यूजर्स के लिए लॉक किए गए एसेट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। उस पर्टिकुलर लेंडिंग प्रोटोकॉल के यूजर्स इन टोकन को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बोरो कर सकते हैं। यील्ड फार्मर्स एक्सचेंज और लेंडिंग सर्विस ऑफर करने के लिए DeFi प्रोटोकॉल्स की फाउंडेशन माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो एसेट की लिक्विडिटी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इन तमाम एफर्ट्स के लिए यील्ड फार्मर्स एनुअल परसेंटेज यील्ड के रूप में कैलकुलेटेड रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। यील्ड फार्मिंग मॉडल क्या है? यील्ड फार्मिंग ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स पर डिपेंडेंट है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस स्पेस में ऑर्डर बुक्स के लिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं। AMM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके डिजिटल एसेट के ट्रेड की फैसिलिटी ऑफर करते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेड करने के लिए काउंटर पार्ट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कंसिस्टेंट लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और लिक्विडिटी पूल्स। AMM में होते हैं दो एसेंशियल कंपोनेंट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और लिक्विडिटी पूल्स। लिक्विडिटी पूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो DeFi मार्केटप्लेस को पावर देते हैं। इन पूल्स में डिजिटल फंड्स होते हैं जो यूजर्स को टोकन्स बाय, सेल, बोरो, लेंड और स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। LPs या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वो इन्वेस्टर हैं जो अपने एसेट को लिक्विडिटी पूल में गिरवी रखते हैं और इसके लिए इंसेंटिव्स अर्न करते हैं। इस तरह से यील्ड फार्मिंग टोकन्स के लिए एक लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। यील्ड फार्मिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनमें पैनकेकस्वैप, कर्व फाइनेंस, यूनिस्वैप, वीनस प्रोटोकॉल और आवे जैसे कई नाम शामिल हैं। व्हाट आर द रिस्क टू यील्ड फार्मिंग? जहां फायदा ज्यादा होता है वहां नुकसान का खतरा होना आम है। यील्ड फार्मिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला इन्वेस्टिंग वेंचर है। ऐसे में कुछ रिस्क की बात करें तो इनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, इम्परमानेंट लॉस और कंपोसिबिलिटी रिस्क का नाम शामिल है। इसीलिए यील्ड फार्मर्स को हमेशा इस तरह की पॉसिबिलिटी से अवेयर रहना चाहिए। व्हाट इज स्टेकिंग? क्रिप्टो इकोनॉमी में स्टेकिंग का मतलब है क्रिप्टो एसेट को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोलैटरल के रूप में गिरवी रखना, जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से माइनर्स POW ब्लॉकचेन्स में आम सहमति की अचीवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, ठीक उसी तरह POS ब्लॉकचेन्स पर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए स्टेकर्स को चुना जाता है। POS को आमतौर पर ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये मोर पॉपुलर POW एल्गोरिथम के मुकाबले ज्यादा स्केलेबल और एनर्जी एफिशिएंट है। POW की तुलना में POS स्टेकर्स को रिवॉर्ड्स अर्न करने का मौका भी देती है। POS में एक स्टेकर द्वारा एक ब्लॉक बनाने के चांसेस उनके द्वारा स्टेक पर लगाए गए कॉइन्स के नंबर से प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेक जितना ज्यादा होता है, नेटवर्क से स्टेक के लिए उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड होगा। स्टेकिंग में रिवॉर्ड्स ऑन चेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि हर बार जब एक ब्लॉक वैलिडेट किया जाता है तब उस करेंसी के न्यू टोकन्स को मिंट करने के साथ बतौर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। माइनिंग के कंपैरिजन में कंसेंसस अचीव करने के मींस के रूप में स्टेकिंग ज्यादा वायबल है। इस तरह से माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड इनफ कंप्यूटेशनल पावर जनरेट करने के लिए स्टेकर्स को एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेकिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जो स्टेकिंग के प्रोसेस को आसान बनाते हैं। इसके अलावा यील्ड फार्मिंग जैसी पैसिव इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीकों की तुलना में स्टेकिंग के लिए रिस्क फैक्टर कम होता है। स्टेक किए गए टोकन्स की सेफ्टी प्रोटोकॉल की सेफ्टी के बराबर है। बेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ नजर डालें तो इनमें DeFiSwap, Acru, uHodler, Crypto.com, Binance और Nexo जैसे कुछ नाम शामिल हैं। स्टेकिंग के रिस्क क्या हैं? स्टेकिंग से जुड़े कई तरह के रिस्क हैं, जिसमें वैलिडेटर रिस्क, स्लैशिंग, सर्वर रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्ग लॉकअप पीरियड्स, वेटिंग पीरियड्स फॉर रिसीविंग रिवॉर्ड्स, प्रोजेक्ट फेलियर, मिनिमम होल्डिंग्स, फंड लॉस और थेफ्ट शामिल है। व्हाट इज लिक्विडिटी माइनिंग? किसी भी DeFi प्रोजेक्ट का कोर लिक्विडिटी माइनिंग होता है। ये प्राइमरीली DeFi प्रोटोकॉल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर फोकस करता है। इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए DeFi प्रोटोकॉल के लिक्विडिटी पूल में अपने क्रिप्टो एसेट ETH या USDT जैसे ट्रेडिंग पेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग पेयर के एक्सचेंज में लिक्विडिटी माइनिंग प्रोटोकॉल यूजर्स को एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन प्रोवाइड करता है, जो फाइनल रिडीम के लिए जरूरी है।
जब तक यूजर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए टोकन्स लिक्विडिटी पूल में रहते हैं, प्रोटोकॉल उन्हें अर्लियर रिसीव्ड एलपी के अलावा हर एक ब्लॉक में नेटिव टोकन्स या गवर्नेंस टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड परसेंटेज टोटल पूल लिक्विडिटी के उनके हिस्से पर आधारित है। ये न्यूली मिंटेड टोकन्स लिक्विडिटी माइनर्स को प्रोजेक्ट के गवर्नेंस तक का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और बेटर रिवॉर्ड्स या दूसरे क्रिप्टो करेंसी के लिए इनका एक्सचेंज भी किया जा सकता है। वहीं लिक्विडिटी पूल्स के रूप में यूनिस्वैप, बैलेंसर, बैंकर, कर्व फाइनेंस और कॉन्वेक्सिटी प्रोटोकॉल जैसे नाम मार्केट में मौजूद हैं। क्या है लिक्विडिटी माइनिंग से जुड़े रिस्क? लिक्विडिटी माइनिंग के कुछ रिस्क में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, रग पुल और इम्परमानेंट लॉस का नाम शामिल है। लिक्विडिटी माइनिंग यील्ड फार्मिंग का एक सबसेट है, जो खुद स्टेकिंग का एक सबसेट है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों मेथड्स आइडल क्रिप्टो एसेट को काम पर लगाने के अलग अलग तरीके हैं। वहीं यील्ड फार्मिंग का एम हाईएस्ट यील्ड गेन करना है, जबकि स्टेकिंग एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर रहने में मदद करने पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विडिटी माइनिंग डीफाई प्रोटोकॉल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर फोकस्ड है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। We're entering 2023 in a place where we know only the good actors will survive, and I hope by the end of 2023 we would have eliminated most of the bad actors, and we need a lot of media channels like yours to actually come and cover what entrepreneurs think, what the investors think, so that the broader market is aligned and the broader market understands the risks when they enter the cryptocurrency space. Governments, academia, corporates, startups, investors, everybody is aligned to see how many more innovations will come, or value-driven innovations should come for through these technologies. I think good to see that how Web3 TV has really contributed on awareness side, various fundamentals aspect, explanatory video side. So let it continue for years together. The coming year is going to be really fantastic, and this is the year which we are going to start building the products. So far we have been literally we have been brought down by a lot of scams and other things which keeps on hitting us hard. But I think the moment we start to build the real time use cases and products, that's where we are going to achieve the whatever the hard work that we have put in the last few years, it's going to give the real fruits for us. 2023 is going to be very exciting, as most of these ideas which were conceptualized in 2022 will see execution in 2023, and the metaverse adoption will also increase by minimum 20%. The year 2023 is gonna rocking year for metaverse, as many industry have used AR VR metaverse for some pilot project. This year 2023 is a year where they will scale it up. They will try to adopt at high level at many departments, and we expect that this metaverse race is going to be more sharp, more precise, and more strong. What we will see in the next year is the rise of the true Web3 startups and the companies, and you will see that companies that will be built to last for the next 15-20 years, and I think I'm super excited, super bullish on it, because Loka is definitely going to be one of them. So 2023, I think Web3 ecosystem will continue to grow. As far as the asset prices, I think these are some of the inefficient systems. So as you know, read in Nassim Taleb, inefficiency out of a system will definitely weed out, and that is what is happening.
And I think these kind of inefficiencies, when they have been brought forward, people are now more cautious about smart contract audits. People are more knowledgeable about bringing in transparency through proof of reserves and other concepts. And I think regulatory agencies are also looking at it, what can be done to bring in more regulations here or better regulations here. So I think with these, the Web3 ecosystem will continue to expand in 23. And at the same time, I hope with more self-regulations and external regulations, I think centralized markets or centralized entities within the blockchain space will also improve. देखा मेरी डिजिटल चुटकी का कमाल। पल भर में ही आपको समुद्र की लहरों में गोते खाती टाइटैनिक से अवतार के पैंडोरा प्लैनेट में लेकर आ गई। पर एक्चुअली ना मैं टाइटैनिक में हूँ और ना ही पैंडोरा में। मैं तो हमारे 3.0 टीवी के स्टूडियो में हूँ। Stay tuned to 3.0 TV to know more about the making of Avatar. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. In a report by Deloitte, it has been predicted that the metaverse industry in India might have an economic impact worth between $79 billion and $148 billion by 2035. So to have a better understanding of the current scenario of the metaverse industry, its impact on India's economy and future, we have invited Mr. Utkarsh Shukla, who is the founder and CEO of Yug Metaverse. The first Indian wedding in Metaverse took place on this Made in India Metaverse platform. Welcome to 3.0 TV, sir. Thank you, Vishakha. It's a pleasure to have you, sir. Great to be there. Sir, Metaverse is opening up transformative opportunities, and according to a report by Deloitte, the metaverse industry in India might have an economic impact worth between $79 billion and $148 billion by 2035, as I mentioned. So what are your views on the same? See, I think if you look at it from a very higher end, basically on a very top level, you would realize that there is a jump from the 2D internet that we essentially are using. So, for example, the Amazons or the Googles of the world that we are using, there needs to be a sort of a jump from that 2D internet to a 3D internet. And with the advent of, again, 5G has been launched up in India, and a lot of other technologies are coming in, especially phones are also getting much powerful and much better. So now I think basically is a time where a lot of features sort of basically have come together, which essentially sort of have enabled up the conversion of that 2D internet into a 3D internet. And Metaverse essentially stands about that whole 3D internet, where you'll have the experience of shopping not just by scrolling up the products and clicking on buy, but you will have the experience of sort of going into a three-dimensional shop and then sort of experiencing of the products there. So that ways, I think, again, I'm assuming basically this is only by 2035, this essentially is going to grow, because that change or that conversion is anyways imminent. So I think that ways, I think basically we are just at the very beginning and at the very starting of the phase. There are a lot of issues in terms of basically understanding what the user essentially understands, how the user essentially interacts. So post this phase, we'll start seeing up a lot of
explosion in terms of the 3D experiences. So this is like the old days of internet that was there. So similarly, we are essentially into that sort of old days for the 3D world. True. So I think metaverse, the 5G is going to be a key to metaverse. And with India adopting a hard stance on blockchain and cryptocurrencies, do you think the world's second biggest democracy is a conducive place for the growth of metaverse in contrast to countries such as Dubai, Germany, or US? See, I think that's where somewhere people have to sort of understand that, metaverse, VR, and your entire cryptocurrencies, these sort of have different roles in the ecosystem. So, metaverse can function without a Web3. Obviously, it will be a different sort of a metaverse, basically. So, for example, today, if you look at Roblox, or in fact, what Facebook or Meta basically is also building, they're not using a lot of cryptocurrencies. But, what crypto or basically blockchain sort of provides is a decentralization. Again, basically, for example, we are using blockchains to provide decentralization. But again, crypto is one format or one small use case for the entire blockchain technology. So decentralization is going to be the key, and blockchain enables that. And I think basically blockchain will play a huge role in the metaverses. Crypto, obviously, it's not just in India, basically across the world, basically we are facing a lot of companies who are essentially sort of hitting hard on the Web3 and the crypto market. But yes, basically somewhere down the line, I think, again, Indian government is releasing up the digital rupee and a lot of other CBDTs. Yes. So I think those will sort of fill that place and sort of basically create a system. So since you mentioned that companies are betting big on metaverse, so countries are too betting big on metaverse. For example, if we talk about Dubai, so Dubai is becoming the center of Web3 with the country having its own metaverse strategy. So where do you see Dubai in the next 5 years? See, Dubai, obviously, at a country level, they have the transformational plan for not depending on fossil fuels and instead basically focusing on the new upcoming technologies. And I think basically, and again, a lot of other countries also are sort of basically taking a cue and sort of investing up into a lot of these new age technologies. Because again, basically, as you mentioned initially, that there is an entire bigger market which essentially is going to come in. So obviously, whichever country essentially sort of takes the cue and sort of basically jumps, obviously they will have a upper hand and a leverage in terms of the technology. So since you are an early adopter, what do you think are the advantages for early adopters of metaverse? See, early adopters sort of have, again, both ways, basically. We essentially get to understand what the customer wants. And again, basically, there is a lot of chance for experimentation, sort of user experiences experimentation, and a lot of those technology experimentations. And again, mostly in most of the cases that you see, those early adopters are the ones basically who sort of set up a standard which essentially, again, basically the rest of the community follows. So for example, we essentially, I think it has been more than almost like 8 months or 9 months, basically, we have been working into the market. We have been doing a lot of activities. We have got a lot of hands-on understanding in terms of what the user essentially wants, what works in the metaverse domain, what doesn't works. Because again, on paper, everything looks nice, but the moment you essentially go into the market, you essentially sort of get that feedback from the users and the community and everybody, that in terms of what makes sense. So I think that is something which essentially sort of gives a leverage. And again, basically, if you look at the top companies of the world, basically the Googles and the Amazons, they are again one of those early adopter companies, basically, which were there. So yeah, basically that essentially gives you a leverage in terms of understanding the market. So you claim that Yug Metaverse organized Asia's first metaverse wedding. Can you share details on user base, your projects, and some other commercial data on your project, including investments and tie-ups? See, at Yug Metaverse, we essentially are focusing on a couple of aspects. There's one aspect which we essentially focusing on,
is primarily, I mean, again, experiences are experiences like the wedding and Holi, and a lot of those experiences that we created up were the areas that we essentially got an understanding that how the user interacts with the new technology. Especially if you look at gaming in India, I mean, while there are a few games that have done very well in the past few years, but again, gaming as a broad range subject basically is pretty restrictive in India as of now. I mean, basically, there are mobile games which basically have sort of worked, but again, the PC games and a lot of different genres have not sort of worked. So, with that, what we have done is basically we have sort of understood the market basically. Post that, now we essentially are sort of focusing on a couple of things. One is basically we are essentially focusing on creation of a tool where, I mean, again, it's not just that we should sort of come in. There is a gap in the market where somebody who essentially doesn't has any experience in the 3D content or those sort of areas, or metaverse development sort of an area, they essentially should have a very, very simple tool that they can sort of utilize and create up content using that. So that is one area that we are working very aggressively on that. And we essentially have onboarded a few creators also who essentially are using the tool and sort of creating up the marketplace. So metaverse is all about that. It's not that you essentially are the creator or the one who essentially is creating the experiences, but it's more about a platform where a lot of other people are sort of coming and creating up the experiences. So we are directly working with a few companies, and we are also sort of enabling the community to sort of come in and sort of create content, and then basically in a very easier to learn sort of a fashion. Because I mean, if you go into a typical game development cycle, I mean, that essentially has very sort of a long and a tedious journey. So we essentially want to make that less, so that basically as a platform, I mean, there are a lot of creators who essentially are creating content, and then basically again the users which are sort of coming up and using up the content. So that is the way that we're essentially looking at. And I think basically in the initial phases, the creator community is also something which essentially sort of has, I mean, will have a lot of value in terms of getting up them on the platform. So how do you think the digital identities are going to play a role in shaping the metaverse forward? See, I think digital identities are a very key element of your digital presence. So till now, basically, if you, I mean, again, from a very broad perspective, if you look at it, I mean, in most of the websites that you go, there used to be the option of this login from Facebook and login from Google, because I mean, those two were sort of have sort of basically focused on being a digital identity provider. Similarly, I think in Web3 or the decentralized world, I think somewhere down the line, there would be a lot of decentralized identity providers, which essentially will enable a couple of things. One is basically, with those, you will be able to sort of control the access of your data. It's not that basically you essentially log in somewhere and then basically the application is sort of getting up all of your data, or basically you're freely accessing up the data for the other person. So that control and that ownership, because the moment we essentially are moving in Web3 or a decentralized world, a lot of asset and content will also sort of become up a ownership sort of a focus. So for example, I mean, again, a very simple example. So for example, let's say, I mean, a lot of people would have played Snake games on their Nokia 1100s. They would have achieved a lot of high scores basically. But today, if their phone is not there, nobody knows that how much high scores that they have got. But now basically with a decentralized identity, if you are able to link your high scores to that identity, so today if you do not even have that phone, even if you do not have that game installed, at least you have those high score achievements with you. So I think digital identities will play sort of a very key role into this area. Wow. So with all this, there are some critical issues involved too, whether we talk about cyber security, identity theft, or data security, network vulnerability, and others. So how do you think can we tackle these issues in future? See, I think
there are two parts to it. One is basically, obviously, there are, since a lot of things are built on existing tech stacks, so a lot of those inherent vulnerabilities do come in. For example, I mean, your application will end up using some sort of an API, some sort of a communication methodology. So a lot of those security and those sort of aspects and those sort of issues anyways do creep in. And again, basically for them, there is a lot of things that are being done. But again, along with that, since we are doing, I mean, since it's a sort of a very uncharted territory that the metaverse and the 3D world basically sort of creates up. So I think obviously a lot of those issues will also come in. But again, I think basically that's where we'll have to be vigilant in terms of making sure that the security and especially the privacy. I mean, I think basically privacy is also one of the major concerns along with security, wherein basically, I mean, the user consent and privacy and a lot of those things will also sort of have to happen. So I think that's where a lot of things will anyways emerge. And the moment basically there is a thriving market, again, basically there will be a lot of, I mean, old as well as new solution providers and people who will sort of emerge to essentially create even a business out of it. So metaverse is the future of internet basically, but what do you think is going to be the future of metaverse? See, fundamentally, I mean, again, I mean, if you look at it, I mean, 2D and 2D converts into 3D. So post 3D, obviously there's a little scope basically, but the future would be more in terms of how you are consuming content. So for example, earlier, I mean, basically 10 years before, basically people were consuming content from laptops or from PCs at a distance of, let's say, 1 feet or 2 feet. Today, they are consuming content from mobile at a distance of 10 centimeters, 20 centimeters. I mean, with VR headsets, they are consuming content at a distance of 2 centimeters. Now, basically, I think basically overall, there is also the whole area of brain-machine interface. So I think probably in the next 10 years, basically, we might not even have to open our mouths to talk. We might communicate just by thinking with each other. I think basically those are areas basically which will have a lot of focus basically. All right. So thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Sure. Thanks a lot. So this was Mr. Utkarsh Shukla, founder of Yug Metaverse. He gave us an insight to the current scenario of the metaverse industry and its future. Keep watching 3.0 TV for more such interviews. Do not forget to like, share and subscribe to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Manoj Dara. And I am Ruchi Sharma. In today's special segment, we are focusing on trending topic that has been on the minds of numerous governments of several countries across the globe. Yes, Ruchi, and we are talking about CBDC, the 4 letters which are echoing in the halls of central banks across the globe. So essentially, a CBDC is a digital form of a country's fiat currency issued by its central bank. Unlike volatile cryptocurrencies, a CBDC is seen as a trusted and transparent way to transact digitally. Exactly, but CBDCs also hold the potential to disrupt the digital payments ecosystem in India and in the world. It could emerge as an alternative to mobile money in the future. That's what analysts are expecting. Possibly competing with the likes of examples such as Paytm and the Google Pay. That's why over 100 countries are exploring central bank digital currency. Over 10 countries have launched the e-currency and over 15 countries are running the pilot. But interestingly, Ruchi, there are over 70 countries. Largely these 7 countries are in different stages of development and research according to Atlantic Council's Central Bank Digital Currency Tracker.
Manoj, it is impossible to track the CBDC development of over 100 Exactly. countries in Yeah. this small segment. But you are right, Ruchi, as we speak about CBDC. So we will focus only on 10 countries across the globe and give quick summary for our viewers about advancement of their CBDC launch. So let's get ready for this virtual world tour. Of course, so first let's go to Bahamas. In October 2020, Bahamas became the first country in the world to launch its very own digital currency, Sand Dollar. So Bahamas is also the first country in the world to open its embassy in the metaverse. It seems when it comes to digital technology, this small nation is taking giant leap. Of course. In October 2021, Nigeria became the first African country to establish a CBDC. The eNaira is kept in a digital wallet and can be used for in-store contactless payments as well as money transfers. But however, if you talk about eNaira, recent figures have shown that Nigerian central bank digital currency has been adopted by just 0.5% of the country's population. There is widespread confusion and general mistrust of the ruling elite have hampered eNaira's adoption in Nigeria. So let us give a small numbers for our viewers. So there are roughly around, if you talk about the global internet adoption, Nigeria and this African region accounts for roughly around 20 to 25% of the total population. And this can be a reason why there is a drop in adoption because of the internet access and the mobile accessibility in those areas. Of course. So moving on to Eastern Caribbean Union, it's a group of 7 countries and they are Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts and Nevis, St. Lucia and St. Vincent and Grenadines. So these 7 Eastern Caribbean Union countries developed their own digital currency to assist in speedy transactions and serve those without bank accounts. So this is an important thing to keep an eye on because bank account and the CBDCs, I mean, if you talk about UPI in India, it is directly connected to the banks. Of course. And if you're talking about central bank digital currency, it has to be associated with your bank account. So banking the unbanked is the most important thing as far as CBDC is concerned. Of course. Now let's come back to India. As you know, the Reserve Bank of India recently on 1st November 2022 launched first pilot of wholesale CBDC. RBI Governor Shaktikanta Das hailed it as a landmark achievement. Governor also added that retail CBDC with selected groups will be launched later this month. Exactly, Indian government has announced that the digital rupee will be introduced by 2022-23. Nirmala Sitharaman, India's finance minister, had made the announcement in February 2022. So according to the finance minister, the CBDC would strengthen India's economy, increase efficiency and lower expenses of the country's currency management system and provide a stable, regulated digital currency that will compete with private cryptocurrencies. That's what the market analysts are saying. Of course. Moving to our friendly nation, Russia, in Feb 2022, the Bank of Russia, Russia's central bank, announced that it had completed initial trials of the CBDC, also known as the digital ruble. So, 2 of the banks in the Bank of Russia's trial group has already connected to the digital currency network and completed a full cycle of digital ruble transactions between the customers using mobile banking apps. The next country on the list is our neighboring country of People's Republic of China. In April 2020, China became the world's first large economy to test a digital currency. The People's Bank of China wants the eCNY or Digital Yuan to be widely used in China by 2022. So from China, let's go to Europe. So we will start with Sweden, where the e-krona, a digital currency developed in Sweden, is now being tested. The testing will progress from simulated individuals to an environment with external participants. So if we look at CBDC policy of United Kingdom, so far UK has kept CBDC under the research status. The UK administration doesn't yet provide a timeline, nor does it give guarantee the application of CBDC in the future. However, recently with pro-crypto and pro-CBDC, Rishi Sunak becoming the UK Prime Minister, we might soon see some development about CBDC from UK. Let's hope for the best, but from UK, let's fly to USA. Well,
The US has not set plans to create a CBDC, but the Federal Reserve issued a report in January 2022 which invited public comment and weighed the potential risk and benefits of the US CBDC. In March 2022, President Biden issued an executive order which directed Congress to access the technological infrastructure and capabilities needed for a potential US CBDC. So the Biden administration thinks that US CBDC will help strengthen the nation's role as the global financial leader, but only time will tell when US will move ahead with the CBDC launch. Interestingly, but last but not the least, the 10th country on our CBDC list is Singapore. The Monetary Authority of Singapore has launched a new program called UBIN Plus to test cross-border currency transactions using central bank digital currency, which try to explore various use cases of CBDC such as connectivity between CBDC and other digital assets, forex and liquidity management. MAS is also testing cross-border interoperability in SWIFT CBDC sandbox together with 17 other central banks and commercial institutions. Ruchi, but apart from these 10 countries, many other countries like Israel, Norway, France, Switzerland, Japan, Hong Kong, Thailand, Cambodia and Saudi Arabia are also involved in CBDC research and pilot programs for cross-border payments. There is no doubt that CBDC are going to be launched around the world, but it remains to be seen if CBDCs will be adopted by general population like fiat currency or electronic money like Paytm and Google Pay. Well, that's all there is in this special segment. We will meet again with interesting updates about CBDC and crypto wars. Till then, keep watching 3.0 TV, like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. Have a great day. Thank you. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations, Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. It's been just over a year since social media giant Facebook rebranded as Meta at the Facebook Connect conference on October 28, 2021. The name change reflected the company's growing ambitions to transcend past social media and into the world of Web3, crypto, NFTs and the metaverse virtual worlds where consumers are likely to spend more of their time for both work and play. The company has been busy. Now, before we move ahead about what has transpired in 1 year since Facebook became Meta, please like and share our videos, subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon to get instant updates. In December 2021, Meta debuted its Horizon Worlds virtual reality social networking project, while it also opened up advertising for more crypto ads on Facebook. In April 2022, reports emerged that the company has been considering a digital currency designed for use in the metaverse, internally dubbed as Zuckbucks, though no further updates on the project have been seen since. In May, the company filed 5 trademark applications for a payments processing platform with support for cryptocurrencies and digital assets called MetaPay. In September 2022, the company announced that 2.9 billion users would have the ability to post digital collectibles and NFTs they own across Facebook and Instagram across 100 countries by linking their wallets. Meanwhile, on October 11, Meta announced a partnership with tech giant Microsoft to bring a range of Microsoft Office 365 products into Meta's virtual reality platform
to try and coax other companies to work in virtual environments. However, the year has not come without its challenges, particularly when it comes to the company's metaverse ambitions. Last week, Altimeter Capital CEO and founder called Meta's $10 billion to $15 billion a year investment into the metaverse as supersized and terrifying. Meta's Q3 report appeared to only solidify these concerns, with the stock price falling 23.6% following its release, while Meta's virtual reality research and development arm Reality Labs posted an accumulated loss of $9.44 billion so far this year. Many may also remember Meta's Eiffel Tower fiasco, when an image of Meta CEO Mark Zuckerberg's avatar standing in front of a virtual Eiffel Tower was mocked over lackluster visuals. Meanwhile, an October 15 report from the Wall Street Journal suggested that the company has slashed its monthly active user goal for Horizon Worlds by more than half, suggesting the company's flagship metaverse was falling short. Now, this backlash was touched on by Zuckerberg during the Q3 earnings call on October 26, noting that we are iterating out in the open and that social metaverse platform was still an early version. It's kind of a live early product platform and that's evolving quickly, but obviously has a long way to go before it's going to be what we aspire for it to be, said the CEO. Nevertheless, the technology giant is continuing to push forward with its foray into Web3 and other projects, including artificial intelligence, with Zuckerberg noting on the call that we are on the right track with these investments and the company should keep investing heavily in these areas. The company recently unveiled its latest virtual reality headset, the Meta Quest Pro, during an October 11 virtual event, along with the partnership with Microsoft and a new computer platform, Reality Labs. Work in the metaverse is a big theme for Quest Pro. Now, there are 200 million people who get new PCs every year, mostly for work. Our goal for the Quest Pro line over the next several years is to enable more and more of these people to get their work done in virtual and mixed reality, eventually when better than they could on PCs, said Zuckerberg. Now, between the AI discovery engine, our ads and business messaging platforms, and our future vision for the metaverse, those are three of the areas that we are very focused on, he added. The Quest Pro's face tracking capabilities can help make avatars' facial expressions look more realistic. Initially, users can access this tracking in Horizon Worlds and Horizon Workrooms, Meta said, as well as in several developers' apps such as Painting VR and DJ App Tribe XR. But even with facial tracking, what users see when they pop in the Horizon Worlds, blocky, human-like avatars that exist only from the torso up, floating around a virtual plaza, will now continue to contrast sharply with the image Zuckerberg portrayed during Meta's Connect event on October 11 of his own full-body avatar. In the meantime, investors appear to be getting fed up with the investments in the metaverse at a time when the future of its core business is also deeply uncertain. In the past, Zuckerberg successfully pivoted Facebook's operations once before from desktop to mobile devices shortly after taking the company public, a move that helped supercharge its advertising business and ensure its dominance for much of the next decade. But it remains to be seen if his novice shift towards metaverse would bear any fruits in the long run or not. Well, that's it in today's episode. We will meet again with exciting stories about the metaverse. Till then, keep watching 3.0 TV. Like and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant updates. This is me, Vishakha Thakur, signing off.
and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara. And as you know, the year 2022 is coming to an end. So we have decided that in this special segment, we are going to shed some light on the top 5 influential people of 2022 in the crypto space. So let's get started, and who better to start with the list with none other than Changpeng Zhao. Well, the past half year in the crypto has been one of the bankruptcies, layoffs and steep losses. But two supremely powerful players stood in the stark contrast to this wreckage. One was Sam Bankman-Fried, the CEO of bankruptcy exchange FTX, and the other was his competitor, Binance CEO Changpeng Zhao, better known as CZ. With FTX's dramatic collapse, now we are down to one. Exactly. As of October 2022, Changpeng Zhao's net worth was over $33 billion, having over 8 million followers on Twitter and devoted fans all over the world. Binance had actually announced to invest $500 million in Twitter, ensuring the exchange has a seat at the table during the reign of the Elon Musk. Yes, Manoj. Binance has also committed $2 billion towards recovery fund that aims to buy distressed assets and support the industry for FTX-like collapse. Exactly, there was a broader concern that time as well, and now as we are saying, the markets are currently trading lower. There are other contributors to the fund such as Aptos Lab and Jump Crypto, but CZ is very much the face of it. There is no doubt that in 2023, CZ is going to emerge even stronger force to reckon with in the crypto industry. Exactly. Next name on the list is BitStrange. It's not a name of the person, but rather a pseudonym. The name is Zach XBT. Well, the nascent crypto industry has often been compared to a digital Wild West, a lawless place where fortunes can just as easily be made as broken and black hat-clad bad guys roam the frontier unchecked by the law. Exactly, but however, in this Wild West, the regulators are often outnumbered by outgunned by tech-savvy scammers and fraudsters. That's where Zach XBT steps in, more like a pro bono bounty hunter or a scam-busting vigilante than a sheriff. The pseudonymous Twitter sleuth has been working to expose crypto scams since May 2021. Exactly. Zach XBT doesn't detail on-chain research, tracking wallets and transactions associated with hacks, phishing scam and other attacks, and shares his knowledge in Twitter threads naming and shaming bad actors. Twitter users aren't the only ones taking notice of Zach XBT's threads. The online sleuth's research has led to real-world consequences for some scammers, including the alleged phishing scammers who orchestrated the theft of $2.5 million worth of Bored Ape Yacht Club non-fungible tokens. Well, French authorities have arrested 5 individuals allegedly behind the crime ring and gave Zach XBT a shout-out in a press release which was released in October. Next name on the list is Rishi Sunak, who clearly stood out as the crypto crowd favorite. The UK Treasury, with Sunak at the helm, ushered in Britain's post-Brexit financial strategy earlier this year, which includes measures to bring crypto stabilized against sovereign currencies, collectively known as stablecoins, into the scope of local payments regulations. The Financial Services and the Market Bill is now moving towards Parliament and was recently injected with the rules to regulate crypto broadly as financial instruments. The proposed regulations could solidify the UK's crypto agenda in the wake of the European Union's own sweeping markets in crypto assets framework targeting digital assets, service providers and stablecoin issuers. So this was actually considered to be, Rishi Sunak's appointment was considered to be a big positive as far as the crypto and market participants are concerned, because of his theory and ideology towards regulating this space was actually, it has actually got a double thumbs up from the market participants. And under Rishi Sunak's leadership, the Treasury set in motion a public consultation on the crypto taxes. He also ordered the country's coin maker, the Royal Mint, to issue a collection of non-fungible tokens, although nothing has materialized from the initiative yet. But these are the positive steps. Right. Sunak too will eventually have to address his plans for crypto, and the industry is sure to be paying close attention. Now let's move on to the next name on the list. Despite keeping the legality of crypto in limbo, India's Finance Minister Nirmala Sitharaman was the chief architect of the Finance Bill of 2022, which includes stiff taxes on crypto that resulted in the ecosystem entering a period of pain. That is actually which we have witnessed, and the broader Terra Luna collapse followed then. The India's crypto downturn after
enacting a 30% taxes on profits and the more controversial 1% TDS was brutal. Within 10 days of April 1st, imposing of the 30% taxes, trading volumes nosedived for more than 50% on some exchanges. This was exacerbated by rising inflation, Russia's war on Ukraine, global crypto contagion, and investigations against at least 10 crypto exchanges. Exactly, but recently, however, as crypto investors around the globe reeled from the sudden collapse of the crypto derivative exchange, FTX implosion in the aftermath was relatively seen less severe because of the measures announced by the government. In this chaotic crypto economy, Sitharaman is gaining power to lead the worldwide debate on crypto regulation. Starting in December, India will host the G20 summit in 2023. However, India holds the presidency, gets to seek three priorities, and Finance Minister has already indicated that framing crypto regulations will be an international priority during India's term. In 2022, she imposed harsh crypto taxes in India. Next year, she is positioned to frame crypto regulations for the world. That's a big news. But last but not the least, the next name on our list is Jerome Powell. In a perfect world, crypto wouldn't be influenced by fiat-based monetary policy, and Jerome Powell, chairman of the US Federal Reserve, wouldn't be one of the most influential people in the industry. But as proven by the latest crypto meltdown, Powell has driven the market narrative more often than not in 2022 because of the inflation measures, and to control the inflation, he has increased interest rates more than 7 times in the year. Right. 4-decade high inflation has been the focus of economic policy leaders around the globe this year. But that has been particularly true for Jerome Powell and his colleagues at the Federal Open Market Committee, the body that has raised interest rate at a rapid pace since March from net zero levels to the current 3.5 to 4%. Though the correlation has since weakened, macroeconomic uncertainty is likely to persist into next year. Fed officials have signaled further rate hikes are coming in 2023, dashing the hopes of Bitcoin maximalists and crypto believers. Powell's impact on crypto assets will continue. Well, that's all there is in this special segment. We will meet again with exciting update about the cryptoverse. Till then, keep watching 3.0 TV. This is me, Manoj Dara, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Please like and share our videos, subscribe to our channel, and press the bell icon to get instant updates. Thank you so much. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.0 टीवी के इस खास एपिसोड में। लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर, अलग अलग प्रयोगों को लेकर काफी उत्साह है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रैवल इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से बदलने के लिए आगे बढ़ रही है। इस एक्साइटमेंट की वजह बड़ी ट्रैवल कंपनियां हैं जो अधिकतर लोग पसंद करते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होने के नाते ब्लॉकचेन में कंज्यूमर्स को सीधे सर्विस प्रोवाइडर के साथ बातचीत करने की अनुमति देकर पूरे ट्रैवल के अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता है। अगर आप सफर के शौकीन हैं, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो आपको इन टॉप कंपनियों के बारे में जानने की जरूरत है जो ब्लॉकचेन को स्थापित करने में अहम रोल निभा रही है। नंबर 1 लिस्ट में सबसे पहला नाम कूल कज़न का है। कूल कज़िन को 2016 में टेल अवीव में लॉन्च किया गया था और दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा ट्रैवलर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जिस तरह का क्यूरेटेड ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, इसका मकसद टूरिस्ट के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में काम करना है। कंपनी का ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम लोकल गाइड को अपनी जानकारी को रोजगार का एक बेहतर अवसर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्लॉकचेन पर आधारित होने की वजह से एप्लीकेशन का फीडबैक और रेटिंग सिस्टम भरोसेमंद है। नंबर 2 साइनब्लॉक एक न्यू कमर है जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल्टी लैंडस्केप को बदलना चाहता है। सिस्टम ट्रैवल ऑपरेटर्स को अपनी खुद की लॉयल्टी टोकन बनाने की अनुमति देता है, जिसे असली कॉइंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और फिएट करेंसी और ब्रांडेड रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन बिजनेसेस को बेहतर डेटा और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने में मदद करता है, जिससे इकोसिस्टम में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलता है।
नंबर 3, ट्रैवल चेन सप्लाई चेन में बिचौलियों को हटाने के लिए ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। यूजर्स को ट्रैवल डेटा कलेक्ट और मॉनिटाइज करने के अलावा ताक झांक से छिपाने की अनुमति देता है। यूजर्स अपने सर्विस प्रोवाइडर या ट्रैवल एजेंसी के साथ डेटा का एक्सचेंज करने के बदले में टोकन हासिल कर सकते हैं। टोकन को बाद में पैसे या सर्विसेज के लिए रिडीम किया जा सकता है। नंबर 4, वाइंडिंग ट्री एक ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप है जो ट्रैवलर्स को टूर गाइड्स, होटल्स और एयरलाइंस जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स से सीधे जोड़ने के लिए LIF टोकन का इस्तेमाल करता है। यह ट्रैवलर्स के लिए संबंधित चार्जेस को कम करता है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट को भी कम करता है। नंबर 5, पॉपुलर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वेबजेट ने बुकिंग आसान करने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है। वेबजेट का सिस्टम ब्लॉकचेन पर एक इम्यूटेबल लेजर में सभी चीजों को दर्ज करके कंज्यूमर एक्सपीरियंस में सुधार करता है ताकि धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस की संभावना को कम करने के साथ सेलर और कंज्यूमर के बीच की दूरी भी कम की जा सके। दोस्तों, भारत में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भविष्य समझा जा रहा है और इसे प्राइवेट ही नहीं, सरकारी दफ्तर भी इसे अपना रहे हैं। कॉफी, कॉटन से लेकर दाल तक के व्यवसाय को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेटावर्स की तरफ ज्यादा झुकाव देखने मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लॉकचेन टूरिज्म फोकस कंपनीज एफिशिएंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करेगा, जिससे टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. बैंकिंग की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम मास्टरकार्ड, जिस पर हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं। ग्लोबली लोग इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वही मास्टरकार्ड अब वक्त के साथ क्रिप्टो की तरफ अपनी बढ़ती दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। जी हाँ, मास्टरकार्ड ने कई NFT मार्केटप्लेस के साथ पार्टनरशिप कर अपने कार्ड होल्डर्स को NFTs बाय एंड सेल करने की कन्वीनियंस तो जून 2022 में ही दे दी थी। डिजिटल एसेट के लिए मास्टरकार्ड के सपोर्ट की बदौलत क्रिप्टो पेमेंट्स मेन स्ट्रीम पर आ गई थी और अब मास्टरकार्ड ने NFT कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड के साथ ये जता दिया है कि उनका रुझान धीरे धीरे NFTs और क्रिप्टो की तरफ बढ़ रहा है। भले ही बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन इस मैसिव इंडस्ट्री को वो हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते। इसीलिए क्रिप्टो से थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाकर रखती है बैंकिंग इंडस्ट्री। खबर है कि मास्टरकार्ड ने कस्टमाइजेबल NFT डेबिट कार्ड्स लॉन्च कर दिए हैं। इन कार्ड्स की मदद से वो NFT होल्डर्स जो किसी खास NFT कलेक्शन के अवतार ओन करते हैं, उस आर्टवर्क को कार्ड पेमेंट पर ऐड कर सकते हैं। मास्टरकार्ड ये कार्ड्स यूरोपियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हाई के साथ पार्टनरशिप में लेकर आया है। हाई पर गोल्ड मेंबर्स अपनी NFTs के साथ इन डेबिट कार्ड्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं। हाई पर गोल्ड मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि आप 100,000 हाई डॉलर्स ओन करें, जो कि हाई प्लेटफॉर्म का नेटिव टोकन है। 100,000 हाई मतलब करीब $4,600। इन कार्ड्स के जरिए जहां भी मास्टरकार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं और अवेलेबल है, वहां यूजर्स फिएट मनी, स्टेबल कॉइंस या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ मेंबरशिप्स में तो होटल क्रेडिट्स, कैशबैक इंसेंटिव्स, नेटफ्लिक्स पर रिबेट और स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शंस जैसे बेनिफिट्स तक अवेलेबल हैं।
मास्टरकार्ड क्रिप्टो एंड फिनटेक एनेबलमेंट वीपी क्रिस्टियन राव का कहना है कि एनएफटीज और क्रिप्टोज में कंज्यूमर के बढ़ते इंटरेस्ट को देखते हुए ये पेमेंट प्रोवाइडर उन कस्टमर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए कमिटेड था जो इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कार्ड कुछ चंद एनएफटी कलेक्शंस को ही सपोर्ट करेगा। तो अगर आप क्रिप्टोपंक्स, मूनबर्ड्स, गॉब्लिन टाउन, बोर्ड एप और अजूकी जैसी ब्लू चिप एनएफटीज ओन करते हैं तो हाई की गोल्ड मेंबर बनने के लिए आपको अपनी एनएफटी ओनरशिप वेरीफाई करनी होगी, तब आप कस्टम कार्ड हासिल कर पाएंगे। वैसे कार्ड्स फिलहाल 25 यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया कंट्रीज और द यूनाइटेड किंगडम में ही अवेलेबल है। पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो मार्केट में चल रही मंदी का असर ब्लू चिप एनएफटीज पर भी पड़ा है। एनएफटी गो के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से ब्लू चिप एनएफटीज की परफॉर्मेंस बेहतर होती दिख रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन एनएफटी कलेक्शंस की तरफ एनएफटी एंथुसियास्ट का इंटरेस्ट एक बार फिर बढ़ेगा। तो भले ही एनएफटीज के फ्यूचर पर सवाल उठते रहें, लेकिन मास्टरकार्ड जैसे पेमेंट प्रोवाइडर्स जब तक एनएफटी सेक्टर को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक एनएफटी एंथुसियास्ट की हिम्मत बनी रहेगी और एनएफटी वर्ल्ड तरक्की करता रहेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 TV में। वर्ष की शुरुआत के बाद से टॉप क्रिप्टो करेंसी में तेज बढ़त नजर आ रही है। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों ने 24 घंटे की रैली का अनुभव किया, जिससे वे 3 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले दिन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 1.30% की बढ़त हुई है, जिससे टोटल $850 बिलियन हो गया है। 24 घंटे की टोटल वॉल्यूम 88.95% बढ़कर $45.35 बिलियन हो गई है, जिसमें डीफाई का हिसाब उस फिगर का 8.22% है। स्टेबल कॉइन्स की टोटल वॉल्यूम अब 24 घंटे के मार्केट का 91.98% है, जो $41.71 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.34% से थोड़ा कम होकर 38.98% पर आ गया है। सोलाना का बॉन्क 24 घंटे में 50% क्रैश हो गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने $17,200 पर फ्लैट ट्रेड किया, जबकि ईथर ने पिछले 24 घंटे में 2% की बढ़त के साथ $1,325 के आसपास ट्रेड किया। धीमी शुरुआत के बाद से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने रफ्तार पकड़ी है। CBDCR के रिटेल यूजर्स की संख्या इस महीने के अंत तक 50,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में ये संख्या करीब 16,000 है और भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 1 दिसंबर को ई-रूपी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि डिजिटल करेंसी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। सूत्रों ने कहा, पायलट के लॉन्च के बाद से लगभग 16,000 यूजर्स ने लगभग 64 लाख रुपए लेने का लेन देन किया और इस्तेमाल में आसानी, जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ बिंदुओं के साथ उम्मीद है कि रफ्तार और तेज हो सकती है। डिजिटल रूपी होलसेल पर पायलट 1 नवंबर को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में ई-रूपी W के लिए एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 200 करोड़ है। रिटेल पायलट प्रोजेक्ट में 8 बैंक भाग ले रहे हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, द येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। ई-रूपी का इस्तेमाल वॉलंटरी है और ये सर्कुलेशन में टोटल करेंसी का हिस्सा है।
8 जनवरी को पोस्ट की गई एक लीगल फाइलिंग के अनुसार लगभग 117 पार्टियों ने इनिशियल बिड्स की समय सीमा के रूप में FTX यूनिट्स को खरीदने में रुचि व्यक्त की है, जबकि क्रिप्टो कंपनी के बैंक्रप्सी के केस में सालों लग सकते हैं। लेजरएक्स, FTX जापान, FTX यूरोप और स्टॉक क्लियरिंग प्लेटफॉर्म एम्बेड की बिक्री को प्राथमिकता दी है, ये दावा करते हुए कि वे जल्दी से नहीं बेचे जाने पर अलग होने और वैल्यू खोने का जोखिम उठाने में सबसे आसान है। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए FTX ग्रुप द्वारा हायर्ड इन्वेस्टमेंट बैंक पेरेला विनबर्ग के एक पार्टनर पेरेला विनबर्ग द्वारा साइंड एक लीगल डिक्लेरेशन के अनुसार 8 जनवरी तक ग्लोबली अलग अलग फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक काउंटर पार्टी सहित लगभग 117 पार्टियों ने डेटर्स के लिए एक या अधिक बिजनेसेस की संभावित खरीद में रुचि व्यक्त की है। कॉफस्काई के अनुसार अब तक FTX ने 59 कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स पर साइन किया है। लेजरएक्स, FTX US की डेरिवेटिव्स आर्म और एम्पायर की कुछ बची हुई कंपनियों में से एक 56 एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैक को लीड करती है। 9 जनवरी को फ्रांस की फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी की अध्यक्ष मैरी एनी बाबेट लायनी क्रिप्टो कंपनियों को एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मजबूर करना चाहती हैं, अगर वे पहले से ही देश में रजिस्टर्ड नहीं हैं। बाबेट लायनी पिछले साल फ्रेंच सेनेट द्वारा प्रस्तावित एक कदम का समर्थन करते हुए दिखाई दी थी, जिसके लिए क्रिप्टो फर्म्स को यूरोपियन यूनियन के नए MiCA रेगुलेशन से पहले कुछ रेगुलेटरी रिकॉग्निशन प्राप्त करने की जरूरत होगी, जो 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी होने के लिए तैयार है। रेगुलेटर के एक ट्वीट के अनुसार बाबेट लायनी ने एक इवेंट में कहा कि AMF पार्लियामेंट की तरह क्रिप्टो सर्विसेज के नॉन रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स के लिए मैंडेटरी लाइसेंसिंग के एक शासन के लिए एक क्विक ट्रांजिशन को बुलावा देता है। बायनांस सहित कई जाने-मानी कंपनियां ने AMF के साथ रजिस्टर किया है और रजिस्ट्रेशन में कंपनियों के गवर्नेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अनुपालन की जांच शामिल है। किसी भी प्रदाता को अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये फ्रेंच लॉ के तहत निर्धारित एक वॉलंटरी प्रोसीजर है। कैल्विन हैरिस का पहला विया कॉन्सर्ट शुक्रवार 13 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जो उसके आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट के माध्यम से 2D में देखने के लिए फ्री होगा, जबकि यूरोप और एशिया के फैंस पिको वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के माध्यम से 3D में कॉन्सर्ट का अनुभव कर सकेंगे। हैरिस डिजिटली एनिमेटेड परफॉर्मेंस में एक वर्चुअल एवेटार के रूप में दिखाई देंगे, जिसका एम फैंस को कैल्विन के वर्चुअल यूनिवर्स के माध्यम से एक म्यूजिकल जर्नी पर ले जाना है। पिछले 24 घंटों में गाला में 143% से ज्यादा और 2022 में 60% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये गाला द्वारा ड्वेन जॉनसन और मार्क वेलबर्ग के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा के बाद आया है। इसने 4 दिनों में अपने गाला टोकन की 121% वृद्धि में सहायता की। गाला गेम्स ने 6 जनवरी को घोषणा की कि उसने 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ एक मोबाइल गेम स्टूडियो का अधिग्रहण किया है। स्टूडियो का टोटल रेवेन्यू $100 मिलियन से ज्यादा हो गया है और कई गेम वर्तमान में ऐप स्टोर में अवेलेबल भी हैं। कई सालों के विकास के बाद एप्पल का मेटावर्स में पहला बड़ा कदम एक हाई एंड मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कथित तौर पर इस स्प्रिंग सीजन में पहली बार दुनिया के लिए अनावरण किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी दिग्गज आने वाले महीनों में अपने एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस से पहले अपने हाइब्रिड हेडसेट को प्रदर्शित करने की संभावना है, जो आमतौर पर जून में होता है। कुछ थर्ड पार्टी डेवलपर्स कथित तौर पर पहले से ही डिवाइस के लिए ऐप बना रहे हैं, जिसे रियलिटी प्रो कहा जा सकता है। स्प्रिंग सीजन के घोषणा के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कथित तौर पर इस साल के अंत में नए आईफोन्स और दूसरे कई रिफ्रेश्ड एप्पल डिवाइसेस के साथ जारी किए जाएंगे। कथित तौर पर हेडसेट के ऑपरेटिंग सिस्टम को XROS कहा जाएगा, हालांकि इसे इंटरनली बोरियलिस कहा जाता है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने सोमवार को अब्राहम ईजनबर्ग के खिलाफ मैंगो मार्केट्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में हेरफेर करने और डिजिटल एसेट्स में $110 मिलियन से ज्यादा चोरी करने का आरोप लगाया। जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा 11 अक्टूबर 2022 हैक के साथ ईजनबर्ग पर आरोप लगाए जाने के एक हफ्ते बाद ये खबर आई है। CTFC ने इसकी फाइलिंग में लिखा, प्रतिवादी की योजना का लक्ष्य सीधा था।
मूल्य हेरफेर के जरिए मैगो मार्केट्स पर अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग्स के मूल्य को आर्टिफिशियली बढ़ाना ताकि वह बड़ी मात्रा में डिजिटल एसेट्स बोरो कर सके, जिसे चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैगो मार्केट्स एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो एक डाओ द्वारा शासित है, जो अपने नेटिव टोकन MNGO के होल्डर से बना है, जो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए लेंड, बोरो, स्वैप और लीवरेज का इस्तेमाल करने देता है। ई बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क के विपरीत बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई के अधिकारियों ने अक्टूबर से प्लेटफॉर्म में बंद अपनी खुद की किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वापस नहीं लिया है। कंपनी के एक वकील ने सोमवार को न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक US बैंकरप्सी कोर्ट को बताया है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के तुरंत बाद नवंबर में ब्लॉकफाई ने बैंकरप्सी के लिए दायर किया था। लॉ फर्म कर्कलैंड एंड एलिस के पार्टनर और ब्लॉकफाई के प्रतिनिधि जोशुआ ससबर्ग ने कहा कि ब्लॉकफाई ने बुधवार को फाइनेंशियल अफेयर्स के एक बयान के साथ अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को फाइल करने की योजना बनाई है, जिसे ब्लॉकफाई ने बाद में ट्विटर पर पुष्टि की। ससबर्ग के प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि नवंबर में पहली सुनवाई के तुरंत बाद कंपनी ने एक सेल प्रोसेस शुरू की है और कुछ या सभी बिजनेस के लिए 106 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच गई। कंपनी 30 जनवरी की सुनवाई में बिडिंग प्रोसीजर्स की कोर्ट अप्रूवल के लिए पूछने की योजना बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल NFT ट्रेडिंग कार्ड्स जारी किए हुए एक महीने से भी कम समय बीत चुका है। यहां तक कि उनके समर्थकों से भी काफी हद तक हैरान कर देने वाली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जैसे जैसे ट्रेडिंग डिमांड में गिरावट जारी है, NFT ट्रेडिंग कार्ड प्रोजेक्ट अब नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रिप्टोस्लैम के डेटा के मुताबिक रविवार को ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स प्रोजेक्ट के लिए सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग की वॉल्यूम $21,000 से थोड़े ज्यादा के नए दैनिक निचले स्तर पर पहुंच गई। 2023 में अब तक 5 जनवरी को प्रोजेक्ट के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे टैली देखी गई है, जो $33,000 से थोड़ी कम है। रविवार की टैली 17 दिसंबर की चरम दिन में तुलना में डेली वॉल्यूम में 99% से ज्यादा की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है, जब ओरिजिनल प्राइमरी सेल के तुरंत बाद $3.5 मिलियन से ज्यादा मूल्य के NFTs को ट्रेड किया गया था। एक महीने पहले उसी दिन 2000 से ज्यादा यूनिक बायर्स थे और 16 दिसंबर को जैसे ही कीमतें बढ़ने लगी 3,300 से ज्यादा यूनिक बायर्स थे, क्योंकि कीमतों में वृद्धि शुरू हुई थी। लेकिन रविवार को जब सेल्स वॉल्यूम एक नए दैनिक निचले स्तर पर पहुंच गया तो क्रिप्टोस्लैम ने टोटल 98 ट्रांजैक्शन में सिर्फ 28 यूनिक बायर्स की सूचना दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. You are watching a special show, Crypto Masters. The metaverse and NFT markets continue to decline. NFT sales were down around 60% in the third quarter of 2022 compared to the previous quarter, according to a Reuters report. Earlier this year, Meta posted its first quarterly revenue decline. Once again, Meta's financials are not inspiring much faith in its investors this quarter. So to have a better understanding of the current scenario of NFT and Metaverse market, we have invited founder and Metaverse coach of Metaverse 911, Mr. Rahul Sethi. Welcome to 3.0 TV, sir. Sir, the falling crypto prices have hit the Metaverse and NFT trading volumes. What are your views on the same and what is the current scenario of the market? Of course, because of the falling crypto currency and pretty much many of the exchanges holding off the business in the past, as you've seen, including, of course, a number of exchanges where there have been a lot of government scrutiny and a lot of bad press. It has taken a big hit on the crypto market per se. However, though NFTs also have been falling in the trading business, I personally believe that that's not because crypto has fallen apart. NFT is primarily one source of a collectible that continues to be of interest to many, many people. And while it has been a collectible for someone to sort of also buy movies and sometimes pictures and infographics and so on and so forth, NFTs are also now turning out to be a good collectible as a utility in businesses. So I think we'll wait and watch for the next 6 to 8 months, but definitely I am pretty sure that NFT markets are going to be remaining in the same pattern. Sir, according to various reports, the metaverse platforms such as Decentraland and Sandbox are struggling to retain users despite having multi-billion dollars worth of market caps. But these platforms deny any such claim. So what are your views on the same? All right, so there's been quite a lot of bad press again, about Decentraland, Sandbox, and many of the other platforms which are not having the kind of users that, that should be, because some of them claim that Decentraland has got over 39 to 40 people a day. Some claims, up to 5,000 to 8,000 people. Let me clarify. So first of all, any of these metaverses are not built for people who are mid-age to the old age, because most of metaverses are built for Gen Z and Gen Alpha. That's one. In reality, just purely Decentraland has got over 56,000 plus MAUs. He's got over 1,074 smart contracts right now. This is the data that I downloaded from an authentic source, and there are over 150 odd DAO proposals, the new DAO proposals that are also in the pipeline. So if somebody says to me that, hey, Sandbox and Decentraland does not have the kind of users right now, they have, absolutely, because it's getting built. And as it continues to get built, more and more people from the Gen Z and Gen Alpha, platform ecosystem, would walk into this, because experiences also have to be made in a way. So experiences, when they grow, the people getting attracted like a honey in a bee kind of system, So this ecosystem is right now being built. It's too early for us to sit down and say, hey, which one will work and which won't work. I think we have reasonable success stories in place, including Roblox, Sandbox, Zapato, and so many other, I think there are over 50 odd metaverses platforms that I continue to track. So I think once again, it's all about timing. So wait for another, few months, and as 5G tech, tips into the hands of the Gen Z, let me tell you that most metaverses will see a rise in their occupancy rate and the overall interaction. And along with this, the third quarter volume of top metaverse projects has